Awesome. Super excited for today's session, guys. Very good afternoon. Hello. Yes, we can start. I'm just waiting for folks to join in. No, Arpita, I'm waiting for everyone to join in. We'll get started in a couple of minutes. Hi, Nagesh. Hello. Hi, Ganesh. Super excited. Awesome. So we have Shubhashish. Hello. Prashant. Hi, Prashant. Nupur. Amit. Sir, do we need pen and paper? Good to have, not mandatory, but good to have. Good afternoon. So students are still joining in. Shaurya, Gungun. Also, guys, quickly wanted to check with you guys. Daily, if we keep this as the timing, is it fine with you? 2 to 4 p.m. We'll have to stick with one timing. So can we keep it 2 to 4 p.m.? Yeah, works. Okay. I'm good. I'm good. Thank you so much. Thank you so much. Okay. Awesome. So, anyone here who has not attended yesterday's CP orientation, तो कितने लोग हैं जिनको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के बारे में पता नहीं है? ऐसा कोई भी नहीं है? कुछ बच्चे हैं अटेंडेड? यस, यस. तो क्विकली reiterating the purpose of the ICPC Accelerator course, right? One, to become excellent problem solvers. We have started early so that we get the first mover advantage. और हम अपनी कोडिंग जर्नी को जल्दी से स्टार्ट करें. वी स्टार्ट ट्रीटिंग इट लाइक अ चैलेंज. वी प्ले कोडिंग एज अ स्पोर्ट, है ना. प्रोग्रामिंग को हम एज अ स्पोर्ट की तरह ट्रीट करेंगे. दैट्स ऑल अबाउट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग. हम कॉन्टेस्ट्स में परफॉर्म करेंगे, हम कंपटीशन में परफॉर्म करेंगे. विल गेट रैंक्स एंड हमें अपनी प्रेजेंस ग्लोबल लेके जानी है. वी वांट टू compete first with India, all the other universities of India, and then we want to go to the next stage, which is global. And कल मैंने ये बोला था कि ऐसा होगा कि अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के फर्स्ट ईयर के बच्चे काफी सारे बाकी यूनिवर्सिटीज के थर्ड फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स को बीट कर रहे होंगे. एंड दैट विल हैपन इन फ्रंट ऑफ यू, राइट. एंड जस्ट बी रेडी टू विटनेस ऑल ऑफ दिस. एंड फ्रॉम डे वन, जो आपके मेंटर्स ने, इंस्ट्रक्टर्स ने आपके लिए प्लान बनाया है डेली, जो आपको वो गाइड करेंगे, इंश्योर दैट यू आर फॉलोइंग एंड यू आर ऑन ट्रैक. ठीक है. आई थिंक ऑन दैट नोट वी शुड गेट started. Cool. So let me share my screen and we can get started. Cool. अच्छा. द फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट. सर, हम कोडिंग कैसे करेंगे? क्योंकि सर हमारे पास तो कोई कोडिंग आईडीई सेटअप नहीं है. सो व्हाट डू आई डू? सो टू थिंग्स. ठीक है. बिफोर वी स्टार्ट आवर कोडिंग जर्नी, वी विल नीड अ सेटअप और वी विल नीड अ प्लेटफॉर्म जहां पे हम कोड लिखें. सो देर आर टू ऑप्शंस दैट आई एम गिविंग यू. One, you can install a tool like IDE, like VS Code, or PyCharm or something else. VS Code preferred. But I know a lot of you guys here are very new to the whole world of programming. कुछ बच्चे फोन से भी कोडिंग कर रहे होंगे. So I'm not mandating it as of now. And even for today's session, I will be using an online compiler. तो इट इज टोटली फाइन. ठीक है. अगर आप ऑनलाइन कंपाइलर भी यूज करते हो अभी के लिए, वी जस्ट गेटिंग स्टार्टेड एंड आई डोंट वांट टू बर्डन यू गाइस विद पाइथन इंस्टॉलेशन सेटअप एंड एवरीथिंग. अगर आपके पास VS कोड ऑलरेडी है, परफेक्ट, ऑसम, ऑसम. इफ यू ऑलरेडी हैव VS कोड, ऑसम. यू आर यूजिंग रेपलेट, ऑसम. अगर आपके पास ऑलरेडी सेटअप है, वंडरफुल. बट फॉर पीपल हु डोंट हैव अ सेटअप टू राइट पाइथन प्रोग्राम, ठीक है, this link is for you. I am going to share a link. Hmm. Okay, let me just check. Uh, Let me just get the access to chat with everyone. Just give me a second, guys.
Link is in the chat, guys, and we can get started. I'll spam the link one more time. सबके पास ऑनलाइन कंपाइलर होना चाहिए एटलीस्ट, राइट? कूल. एवरीवन रेडी टू स्टार्ट योर प्रोग्रामिंग जर्नी? यस, यू आर ऑन VS कोड, पाईचार्म, कहीं पे भी चलेगा गाइस. मैं बार बार बता रहा हूँ, यूज एनी प्लेटफॉर्म, इट्स टोटली फाइन. बट जिनके पास कुछ भी नहीं है, दे कैन यूज द ऑनलाइन कंपाइलर. ओके, ऑसम. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर प्रोग्रामिंग जर्नी. ठीक है, जब हम प्रोग्रामिंग लिखेंगे, वी आर बेसिकली गिविंग सम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. think I'll have to share my screen. Everyone is able to see my screen? देवसी, ऑनलाइन कंपाइलर का मतलब है कि यू डू नॉट नीड अ डेडिकेटेड ऑफलाइन आईडी इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर. आप ऑनलाइन एक वेब बेस्ड इंटरफेस के अंदर कोड लिख के उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो. आप ऑनलाइन ही अपना कोड लिख के उसको टेस्ट कर सकते हो. आपको कुछ डाउनलोड, सेटअप, इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, दैट इज व्हाट वी आर डूइंग. ठीक है, कूल. नाउ फर्स्टली लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमने कल भी डिस्कस किया था कि प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोग्रामिंग? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोग्रामिंग? क्विक गाइस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोग्रामिंग? कौन बताएगा? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, राइटिंग कोड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम विद कोड. सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बहुत सिंपल चीज है. I can give certain instructions to in English to my colleague, to my friends, to all of you guys. मैं आपके साथ communicate कर सकता हूँ English में, right? But when I want machines, when I want computers to execute certain instructions, तो वो instructions मुझे उनको बताने पड़ेंगे. और क्या वो instructions मैं उनको English में बता सकता हूँ, guys? I want computers to understand certain things. Can I say, boss, please add the following two numbers? Will it be able to do? Not really. Not really. Correct? Yes. So, of course, हम उसमें बाद में जाएंगे, binary and all of that. We'll go on the low level things maybe later on. Right now, all you need to understand that हमें एक programming language की जरूरत पड़ेगी. एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी जिसके जरिए वी विल बी एबल टू राइट सर्टेन प्रोग्राम्स. और जो थॉट्स हमारे पास है वो हम कोड में उसको ट्रांसलेट कर पाएंगे. तो विद अ ह्यूमन यू कैन स्पीक इन इंग्लिश. अब हम कंप्यूटर्स के लिए जो प्रोग्राम्स बनाएंगे, जो इंस्ट्रक्शंस देंगे, वो हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखनी पड़ती है. वी नीड टू राइट इट in a programming language. Now, that programming language can either be any of your popular languages. It can be any language for that matter, right? Python हो सकता है, Java हो सकता है, C++ हो सकता है, और भी कोई लैंग्वेज हो सकती है. That's totally fine. We are starting with Python. And कल मैंने बताया था कि हम Python क्यों चूज कर रहे हैं. Anyone remembers? मैंने बताया था कि हम पाइथन चूज कर रहे हैं. एंड व्हाई आर वी गोइंग विद पाइथन? बिकॉज इट इज इजी टू लर्न. यस, आई डोंट वांट टू स्पेंड सो मच ऑफ टाइम. आई डोंट वांट टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन टीचिंग अ लैंग्वेज. हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, हमें ज्यादा से ज्यादा चीजें ग्रास्प करनी है. सो आई डोंट वांट कि हम अपना मेजोरिटी टाइम जो है वो पाइथन सीखने में या कोई लैंग्वेज सीखने में स्पेंड करें. दैट्स व्हाई वी हैव पिक द मोस्ट इजीएस्ट, सबसे इजीएस्ट लैंग्वेज हमने पिक करी है पाइथन. ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड. बकल अप, विल राइट आवर फर्स्ट प्रोग्राम नाउ. मुझे this is the first set of instruction that I want to give with the help of Python programming. मुझे यहाँ पे आउटपुट में देखो, यहाँ पे मैं इनपुट दूंगा. सो आई राइट माय प्रोग्राम हियर, मैं उसको रन करूंगा और ये प्रोग्राम चल के जो आउटपुट आएगा वो मुझे राइट साइड पे यहाँ पे दिखने वाला है. ठीक है, अब मुझे आउटपुट में गुड आफ्टरनून प्रिंट करना है. हाउ डू आई डू दैट? मुझे आउटपुट में गुड आफ्टरनून प्रिंट करना है. सो दिस इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट आई वांट टू गिव इन पाइथन प्रोग्रामिंग. दैट आई वांट टू प्रिंट अ लाइन दैट सेज गुड आफ्टरनून. या व्हाट डू आई डू? आई यूज द प्रिंट फंक्शन which is offered to me by Python, और जिसकी मदद से मैं कोई भी चीज को
आउटपुट कर सकता हूँ, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मोस्ट ऑफ यू आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट इट, सब लोग स्पैम में, चैट में स्पैम भी कर रहे हैं। सो आई कैन प्रिंट गुड आफ्टरनून, right? Notice that I am using this double quotes and I come back to this soon, but notice that जो भी चीज मुझे आउटपुट में चाहिए मैंने वो लिखा है और उसको डबल कोट्स के अंदर आई हैव पुट इट इनसाइड डबल कोट्स। आई विल टेल यू सून व्हाई वी आर डूइंग दिस। ठीक है, प्रिंट डबल कोट्स के अंदर मैं जो भी लिखूंगा यहाँ पे मैं रन करूंगा, आई एम गोइंग टू गेट दैट इन माई आउटपुट। Yes, yes. Why not? You can use single quotes as well. You can use single quotes as well. That's totally fine. Yes. तो अभी क्या हम बोल सकते हैं कि हमने हमारा फर्स्ट प्रोग्राम लिखा है? Can we say that we have written a first program? Yes. Generally, which is the first program that everyone writes? It's called Hello World, right? जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम हेलो वर्ल्ड से स्टार्ट कर सकते हैं, तो प्रिंट हेलो वर्ल्ड एंड वी रन एंड वी गेट दैट एज द आउटपुट। ठीक है। नाउ दीज ब्रैकेट्स आर सुपर इंपॉर्टेंट। ठीक है, जब जब हम कोई भी फंक्शन यूज करेंगे, वेदर इट इज एन इनबिल्ट फंक्शन और अ सेल्फ डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। अब आपको बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि फंक्शन क्या होता है, आपको बस इतना समझना है कि प्रिंट हमें एक फंक्शनैलिटी ऑफर करता है। क्या फंक्शनैलिटी ऑफर करता है? टू आउटपुट समथिंग ऑन द कंसोल, टू आउटपुट समथिंग, है ना? तो जब जब हम ऐसी कोई फंक्शनैलिटी यूज करेंगे, चाहे प्रिंट के लिए हो, इनपुट के लिए हो, तो ये ब्रैकेट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो अभी हम प्रिंट वाली फंक्शनैलिटी यूज कर रहे हैं विच इज ऑलरेडी डिफाइंड इन पाइथन। सो आई यूज दिस ब्रैकेट्स एंड इसके अंदर मुझे जो भी चीज लिखनी होगी आई विल राइट इट इन कोट्स, राइट? आयन, यू आर नॉट लेट, क्विकली कैच अप। ठीक है। यस, यू कैन प्रिंट इन लोअर केस, तो एवरीथिंग इज केस सेंसिटिव। मैंने यहाँ पे एच कैपिटल लिखा है तो यहाँ पे भी एच कैपिटल आया है, आपको वो चीज दिख रहे होंगे, राइट? नाउ आई कैन पुट मल्टीपल प्रिंट स्टेटमेंट्स, राइट? मैं यहाँ पे और भी मल्टीपल प्रिंट स्टेटमेंट्स डाल सकता हूँ। आई एम लर्निंग पाइथन एंड यू विल सी कि आउटपुट में भी आपको दो स्टेटमेंट्स दिखेंगे। हेलो वर्ल्ड, आई एम लर्निंग पाइथन। तो मैं जितना प्रिंट स्टेटमेंट्स चाहूँ मैं मल्टीपल प्रिंट स्टेटमेंट्स यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। रिमेंबर टू ऐड इन कोट्स। Can we code anything like this? Ganesh, just the beginning. We've just started to see how we can output something, right? My name is Gladden. Run and I'll see that I get this in my output. Why in print all lowercase letters? Krishna, because the function is defined, the name of the function is defined in all lower cases and आप चेंज नहीं कर सकते उसको, है ना? यू कैन नॉट, दिस इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन। मैंने खुद से नहीं बनाया प्रिंट, प्रिंट फंक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर आप पाइथन में कोड कर रहे हो तो इट्स एन एग्जिस्टिंग फंक्शन दैट आई एम यूजिंग, तो आई विल हैव टू फॉलो द सिंटैक्स। देखो बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जहां पे आप पूछोगे कि सर व्हाई आर वी डूइंग दिस लाइक दिस, और मैं बोलूंगा कि बिकॉज इट इज पाइथन सिंटैक्स। तो कुछ चीजें हमें सिंटैक्स की वजह से करनी पड़ रही है। जैसे आप, मैं अगर आपसे पूछूं इंग्लिश में सेंटेंस खत्म होने के बाद फुल स्टॉप क्यों लगाते हैं, बताओ? इंग्लिश में सेंटेंस खत्म होने के बाद फुल स्टॉप क्यों लगाते हैं? है जवाब आपके पास? क्या आपके पास, बता रहा हूँ व्हाट इज सिंटैक्स, क्या आपके पास इसका जवाब है कि सेंटेंस खत्म होने के बाद फुल स्टॉप क्यों लगाते हैं? वो इंग्लिश का रूल है, वो इंग्लिश के रूल्स है। अगर आपको इंग्लिश में लिखना है, बात करें, इफ यू वांट टू स्पीक in English, if you want to write in English, you end your sentence with a full stop. There are some rules that you follow if you are using a particular language. Similarly, when we are talking about syntax, when I say syntax, in simple words, you can think of it like grammar of a programming language. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने का एक तरीका होता है, उसके अपने रूल्स होते हैं और उस रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ता है। और इसी रूल्स को, इन्हीं रूल्स को हम सिंटैक्स बोलते हैं कि चीजें डिफाइन की गई है कि आपको प्रिंट करना है तो ऐसे ही होगा, आपको अगर कोई चीज 10 बार परफॉर्म करनी है तो ऐसे ही होगी, आपको अगर कंडीशन लिखनी है तो ऐसे ही होगा, राइट? इट इज ऑलरेडी डिफाइंड, करेक्ट? सो रूल्स आर डिफाइंड, आई एम जस्ट टीचिंग यू व्हाट द रूल्स आर, राइट? सो पहला रूल ये है कि जब भी आपको कोई चीज प्रिंट करनी है, वेन एवर यू वॉन्ट टू प्रिंट समथिंग, यू यूज ऑल लोअर केस कैरेक्टर्स, PRINT, print with brackets. Inside that brackets, if I want to print something,
I can use double quotes and write my string, write multiple characters. Yes, Kayak. Syntax is more like rules. Rules of your programming language. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो अब हमने देखा है कि we can print certain statements. Okay, cool, awesome. Um, we would not always want to print predefined strings like this. हम हमेशा हार्ड कोड शायद नहीं करना चाहेंगे. आई विल कम टू दैट. वाई डबल कोट्स? आई विल कम टू दैट. तो जब भी हम एक स्ट्रिंग प्रिंट करेंगे, मल्टीपल कैरेक्टर्स हमें प्रिंट करना होगा, कोई भी सेंटेंस प्रिंट करना होगा, दैट इज रिप्रेजेंटेड विद द फॉर्म ऑफ डबल कोट. जस्ट स्टिक विथ मी, आप टेंशन मत लो, आप टेंशन मत लो. एक एक पॉइंट आई एम गोइंग टू कवर, राइट? वन बाय वन विल कम टू दैट, राइट? लेट्स स्टार्ट विथ अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल. मुझे एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें दो नंबर्स है और दो नंबर्स का एडिशन करके मुझे आउटपुट चाहिए. कैन वी राइट दिस प्रोग्राम गाइस? क्या हम इस प्रोग्राम को लिख सकते हैं? दो नंबर्स, हमें दो नंबर्स डिफाइन करने हैं और उनका एडिशन करके आउटपुट प्रिंट करने. कैन वी राइट दिस प्रोग्राम? यस, यस, वी कैन राइट दिस प्रोग्राम. So let's define two numbers. Okay, very very easy, very very easy. Acha, have you learned this in maths? For example, you want to find the area of a rectangle. So there will be certain things that are given to you, right? For example, length of a rectangle is 5 and breadth of a rectangle is 8. What is the area of the rectangle? What is the area of the rectangle if length is equal to 5 and breadth is equal to 8? 40. Area of the rectangle is 40. Okay, what will happen if I change the length to 6? What will happen if I change the length to 6? Does your output change? Yes, your output changes. Yes, your output changes. That means my output is currently depending on the value of two variables, length and breadth. And why am I calling these variables? Because the value can change. I have defined it 6. Maybe later on I would want to make it 7 and my output will change. So the value of length can change. The value of breadth can change. So let me call it a variable, something that can change. And it will carry a value, of course. It will carry a value, but that value can change. So let's say now I have two numbers. I have two numbers, A and B. I want to give some value to A. How do I give a value to A? A is equal to 5. B is equal to 7. Wow, it's that easy. I have created two variables. What are A and B? Let's use the correct technical terms here. What are A and B? A and B are called as variables. A and B are called as variables because the values that they are carrying can be changed. The values that they are carrying can vary, can change. So they are called as variables. So how easy is it to create variables? Very easy. Write the name of the variable, use the equal to, which is also called as the assignment operator. इक्वल टू हम तब यूज करेंगे जब हमें कोई चीज असाइन करनी होगी, राइट? सो इफ आई वांट टू एक्सप्लेन दिस करेक्टली, आई कैन से there is a variable with name A which is assigned the value 5. There is a variable B which is assigned value 7. Are you understanding this? There is a value C which is assigned value 8. Yes, perfect. Now, I have two variables. A is equal to 5, B is equal to 7. I want to add them. In maths, when I want to add two numbers, how do I add two numbers in mathematics? बताओ, A equal to 5, B equal to 7. Addition कैसे करोगे? Addition कैसे करोगे? Plus, yeah, you need the addition operator. You need the addition operator, right? A plus B, correct? So I can write C is equal to A plus B. And मैंने पहले बोला था Python is a very easy to learn language. A lot of things that you can just look and understand, right? I can see that A equal to 5. Yes, A is carrying the value 5. B has the value 7. C is equal to A plus B. So
What value will C carry? Can anyone tell me? What value is C going to carry? Can anyone tell me? C is equal to not 15, 12. C is equal to 12, right? Right now, when I print C, what is the output that I should get? हमने ऑलरेडी देखा है कि प्रिंट की मदद से हम कोई भी चीज को आउटपुट कर सकते हैं. सो नाउ द क्वेश्चन इज व्हेन आई प्रिंट सी व्हाट इज द आउटपुट दैट आई एम गोइंग टू गेट. 12 मिलेगा. करेक्ट. 12. So let's try. Let's try. I'm going to run, and yes, we are getting 12 in the output. अच्छा, किसी का क्वेश्चन ये है? किसी का क्वेश्चन ये है? Yes, संस्कृति से. Sir, you're not using quotes. Sir, you're not using quotes this time. Very, very interesting question. Very, very interesting question. अब I will answer. जब मैं प्रिंट सी कर रहा था, यू हैव टू आंसर दिस. मुझे सी प्रिंट करना था या फिर मुझे सी का वैल्यू प्रिंट करना था? आप बताओ. क्या मुझे सी प्रिंट करना था या फिर सी का वैल्यू प्रिंट करना था? दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. I wanted to print the value of C. So C is a variable which is already defined. So when I write print C, I get the value of C. But जो हमने पहले सीखा है, printing with the help of quotes, which I am calling as a string. Now C is a character. C is an English alphabet जो मुझे print करना है. एक English का alphabet, एक character है C जो मुझे print करना है. So now when I do print C, I get C. But are you able to understand the difference between ये वाला print C and ये वाला print C? So C without quotes, I am printing the value of C. When I put C in quotes, I am actually literally printing C. तो क्या हमें लिटरली सी प्रिंट करना था? अगर हाँ, तो आप ऐसे करोगे. अगर मुझे सी की वैल्यू प्रिंट करनी थी, तो आई विल प्रिंट इट लाइक दिस. यस. So whenever you want to print the value of C, C is a variable and I want to print the value of C, I'll not use quotes. क्योंकि quotes के अंदर जो भी होता है वो literally print हो जाता है. Those are the characters. It is a string. वो चीज literally print हो जाती है. Whatever is there in the quotes, as it is, you will get in your output. Correct? Yes. Right? So a basic introduction to variables, a very basic understanding of variables and how we can print the value of variables. Correct? अब जब हम वेरिएबल्स पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा और प्रैक्टिस कर लेते हैं. थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेते हैं. लेट्स डू. A इज इक्वल टू 8. B is equal to 5. Can I also print like this? B minus, sorry, A minus B. Can I print like this? क्या ये सही है? क्या ये सही है? Yes, absolutely. What is the output that I'm going to get? What is the output that I'm going to get? 3. Correct. The output that I'm going to get is 3. Perfect. You all are correct. Acha, what will happen if instead of minus, I use some other operation? Maybe multiplication. Multiplication कैसे करते हैं? दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? यस, यू विल यूज द, जो सब लोग बोल रहे हैं, स्टार बोल दो, whatever you want to call it, right? The star operator. So now this, you would read this as A multiplied by B. This operator is called as multiplication operator. Multiplication operator. Asterisk, correct. Asterisk मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर. ये मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर है. ये दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेगा और मुझे आंसर आएगा 40. ये दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेगा और मुझे आंसर आएगा 40. Now we'll explore more operators soon. We'll explore more operators soon. Till then मुझे ये बात बताओ, क्या डेटा सिर्फ नंबर्स के फॉर्म में ही होता है? क्या नंबर्स बस, is all data represented as numbers? No, not really. Not really. So let's try to look at different types of data. Let's look at different types of data. क्या क्या अलग अलग types of data होता है, एक बार देख लेते हैं. ठीक है? A is equal to 8. Okay? A is equal to 8. This is a number. This is a number. तो Python में you can say that
numbers, yeah, number is a type, but number के अंदर भी you can call a number either to be an integer or a float value. अभी मुझे बताओ 8 integer है क्या? Let's start with this question. क्या 8 एक integer है? Yes. Yes. तो पाइथन में फॉर्मली बोला जाए तो पाइथन में डेटा टाइप स्ट्रेट अवे नंबर कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ डेटा टाइप इन पाइथन, बट if I have to be very specific, तो 8 is an integer. 8 is an integer. Correct? But क्या मुझे um, 3.14 स्टोर करना हो? Will I say B is an integer? Will I say B is an integer? No, B is not an integer. तो जब भी आप कोई डेसिमल वैल्यू स्टोर करते हो विच इज नॉट अ होल नंबर, विच इज नॉट एन इंटीजर, 3.25, 8.7, right? It is called as a float value. It is called as a float value, right? Called as a float value. इनफैक्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है? अच्छा, अब ये जो मेरे पास कोड एडिटर है, अगर मुझे यहाँ पे कोई चीज लिखनी है विच इज नॉट कोड, बट आई जस्ट वांट टू राइट समथिंग, जैसे मुझे यहाँ पे लिखना है कि a इज इक्वल टू 8, दिस इज एन इंटीजर। मैं ऐसा अगर लिख दूं फॉर एग्जाम्पल, a इज एन इंटीजर, और मैं इसको रन कर दूं, तो एरर आ जाएगा। नेम इंटीजर इज नॉट डिफाइंड। पाइथन को समझ नहीं रहा है कि इंटीजर क्या होता है भाई। व्हाट इज इंटीजर? बिकॉज आई एम राइटिंग समथिंग फॉर माई ओन अंडरस्टैंडिंग इन इंग्लिश। करेक्ट? तो आपके कोड के अंदर जब आप कोई भी ऐसी स्टेटमेंट लिखते हो, दैट इज मोर फॉर एक्सप्लेनेशन और अंडरस्टैंडिंग पर्पस एंड नॉट लिटरली कोड। ये इंटीजर मैंने अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है कि इसके नीचे एक इंटीजर है। तो all such lines which are not literally code and just statements you are adding to explain your code are called as comments. Are called as comments. Comments are not code, है ना? जो आपकी बाकी लाइन है, जैसे ये दो लाइंस जो है, according to Python syntax, there is a meaning to this line. There is a meaning to this line. There is no meaning to this line integer. क्योंकि एक इंग्लिश स्टेटमेंट या इंग्लिश वर्ड है दिस, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं दिस इज एन इंटीजर, ये एक इंग्लिश स्टेटमेंट है, बट मुझे फिर भी लिखना है, आई वॉन्ट दिस टू बी इन माई कोड फाइल। सो व्हाट डू, आई पुट अ हैश टैग इन फ्रंट ऑफ दिस। आई पुट अ हैश टैग इन फ्रंट ऑफ दिस। तो जब तक हैश टैग नहीं था तब तक मुझे एरर आएगा, क्योंकि मैं इंग्लिश नहीं लिख सकता पाइथन में। दिस इज एन इंटीजर एरर, बट जैसे ही मैंने एक हैश टैग लगा दिया यहाँ पे, एज सुन एज आई पुट अ हैश टैग एंड आई रन दिस, नाउ comments are ignored. Comments are ignored. Code execution successful. No output because मैंने कुछ print नहीं किया है. Yes, so no output. I can print here. Let's say print A or print B. I can do this. Yes, I can do this. Run and I'm going to get the outputs, right? But if I don't put this hashtag, then I am going to get an error. Why I would get an error? Because this is a statement I have written in English. It has no meaning in Python. I'm using this line just for the sake of explanation. So this is a comment. And comment, whenever you are writing comments, you should be using hashtag so that this particular line is ignored. ये line ignore होनी चाहिए. This line should not be interpreted. So this is an integer. ये line ignore होनी चाहिए. मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ this is a float value. This is a float value. क्या ये ignore हो जाएगा अभी? Yes, ये ignore हो जाएंगे. So line number 1 and line number 4 are ignored because they are comments. They are comments. So comments can be, comments are, right? Yes, multi-line comments भी होते हैं. Right now I'm only sticking to whatever we need to get started. So I'm not getting into multi-line comments for now. But जब भी आपको statements ऐसे लिखने हो which you don't want to be executed, जो भी English statements होंगे आप उसको इस तरीके से लिख सकते हो. Okay, moving forward. This is an integer. This is a float value. What other data types do we have? Sometime before हमने discuss किया कि data can be in the form of characters, words, sentences. Yes? Yeah? Yes. So whenever you want to write something more like a sentence or a word, I can create a string. S is a string. And whenever you're writing a string, always use either single quotes or double quotes, right? And I can write
maybe Python. This S is a string. This is a string. What is a string? What is a string? What is a string? Who would want to answer this? What is a string? Collection of characters? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स. एकदम सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं कि एक स्ट्रिंग क्या होती है, व्हाट इज अ स्ट्रिंग, आपको किसी को बताना हो कि एक स्ट्रिंग है, वो बोलेगा है नहीं है, कैसे पता करेंगे? सिंपल, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल कैरेक्टर्स. कितने कैरेक्टर्स है इसमें? एक, दो, तीन, चार, पांच, छ. इट्स अ कलेक्शन ऑफ सिक्स कैरेक्टर्स. इट्स अ कलेक्शन ऑफ सिक्स डिफरेंट कैरेक्टर्स. तो मल्टीपल कैरेक्टर्स साथ में आते हैं तो क्या बनता है? एक स्ट्रिंग बनेगा. क्या बनेगा? एक स्ट्रिंग बनेगा. सो वी सॉ integer, we saw a float value, we saw an integer. Okay. Now there's one more interesting data type. There's one more interesting data type in Python. What if I want a type of data that just tells me if something is true or false? Just two options, positive, negative, true, false. This data type is called as Boolean. Boolean. Boolean data type. Let's say um, let's say I have a variable, okay, and this variable tells me if someone is eligible to vote or not. This is a variable that tells me if someone. So see, all of this will have some meaning. जैसे a equal to 8, a equal to 8, मतलब ये a कुछ represent कर रहा होगा यहाँ पे. Let's say age is equal to 8, right? Let's say I want to define the value of pi. I can define it with the help of, let's say, float data type. अगर मुझे Python as a word define करना है, I can use a string data type here. Now, I want to use a variable that can tell me whether someone is eligible to vote or not. तो उसमें दो ही ऑप्शन, वो वोट कर सकता है या वोट नहीं कर सकता. These are the only two options. So I can either write true, and these are reserved keywords. मैं random words नहीं लिख रहा हूँ. This is a reserved keyword in Python. It has a meaning. True, or I can write false. Yahi, when you're creating a Boolean value, it can either be true or false. So if I write true, anything positive, right? More like binary का जैसे 1 0 वाला system होता है. There are only two possible values. Either it can be true or false. अब ये कुछ basic data types है. Um, yeah, Boolean again, Himanshu. Boolean is a special type of data type that can only store two possible values, true or false. True or false. So whenever you want to store something जिसका आंसर या तो yes या no है, you can use a Boolean data type. You can use a Boolean data type. जैसे is someone is adult. कोई adult है कि नहीं, right? Adult है कि नहीं, इसके दो ही आंसर्स हो सकते हैं. Either he is an adult or he is not an adult. True या false. Only two cases. Yes or no answer, correct. जहां पे भी आपको सिर्फ yes no आंसर हो सकता है, you are going to use true false, right? Okay, cool. So we have seen a little bit around some basic data types. Okay. Now I'm going to erase this. मैं अभी इसको erase करने वाला हूं and मैं आपसे पूछने वाला हूं to guess the data type. Okay. To guess the data type. Let's say n is equal to 32.15. What is the data type of n? What is the data type of n? Float. Correct. इसके आगे मैं hashtag में float लिख देता हूं. That's the right answer. That's the right answer. Okay. Now, how do I validate कि जो भी particular variable मैंने बनाया है, what is the data type of that variable? इसका एक quick check के लिए बहुत आसान तरीका है. You can use the type function. So I can just write print type of n. Print type of n, right? Type is also a function. So type, ध्यान से देखना, type is a function, तो type के साथ भी brackets आएंगे. And print is also a function, तो print के साथ भी brackets आएंगे, right? तो ऐसा समझो आप, मुझे type n, इसका आंसर कुछ तो आएगा. Type of n, इसका आंसर कुछ तो आएगा. There will be some answer of this function type. What does type function tell me? The data type of a variable,
राइट? तो इसका आंसर मुझे प्रिंट करना है, इसका जो भी आंसर आएगा वो मुझे प्रिंट करना है, तो इसको मैंने कट कर दिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, प्रिंट टाइप ऑफ एन। तो जब मैं यहाँ पे रन करूंगा तो इट इज गोइंग टू टेल मी क्लास फ्लोट, this particular n belongs to this, and everything in Python is an object, you don't have to worry about it, but n belongs to class float. We'll learn about classes and objects later. All you need to understand is the type of this data is float. Similarly, let's say um, I have one more variable, and that is more like a sentence. That is more like a sentence, and that sentence is, I love Python programming. I love Python programming. What is the data type of this sentence? What is the data type of this sentence? String. Very good. So I can write print type of sentence. Print the type of this sentence. और वो मुझे बता देगा कि what is the data type. So it tells me class str. str stands for string. So this sentence belongs to string class. तो ये एक string है. I love Python programming क्या है? This is a string. Let's write something else. कोई और let's try with some other value. X is equal to 9. Can anyone tell me what is the data type of X? Print type. Print the type of X. Print the type of X. It is an integer. Correct. Correct. Okay, last one. This is very important. This is very important. Class int. Int stands for integer here. Yes. Okay, you're going to tell me this. You're going to tell me this. Okay. What is the data type of y is equal to 200? Y is equal to 200. Y is equal to 200. Int string character. Okay, int string int value. Okay, let's validate and then I will tell you the logic. Okay, print type of y. Print type of y. So when I print the type of y, I get class string. 200 is a string. How come? But 200 तो एक integer है. 200 तो एक integer है. Then why am I getting a string? Why am I getting a string? Double quotes, exactly, right? When you're typing something inside quotes, anything, everything that you're typing inside quotes, that particular data is represented as a string. तो ये जो 200 है, क्योंकि it is defined in quotes, so now this 200 is not a numerical value. This is actually three characters, 200 in quotes. These are three characters, 200, right? इसीलिए मैंने आपको पहले ही बताया था, be very careful, be very careful. Just a second. Oops. Yeah. So be very careful when you're using quotes. For example, if I print 50, print 50. Let me remove everything else. Let me remove everything else. What is the difference here? What is the difference here? When I print, देखो जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो आउटपुट में मुझे दोनों भी 50 दिख रहा है. आउटपुट में मुझे दोनों भी 50 दिख रहा है. There's no error. I can print 50 as an integer. I can print 50 as a string. No problem. But all you need to understand is that the first one is an integer and second one is a string. First one is an integer and second one is a string. Anything you put inside quotes is a string, right? Both, so Raj says both will not support maths. So somewhat he's thinking in that fashion कि ये number है तो इस पे आप mathematical operation कर पाओगे. Second वाले पे आप mathematical operation नहीं कर पाओगे क्योंकि वो एक string है, which is actually correct. Which is actually correct. So let's see this with an example. If A is equal to 5 and B is equal to 3, when I write A plus B, what output do I get? Try कर लेते हैं.
What output do I get? 8. I get the output as 8. But, but if they were in the form of strings, but if they were in the form of strings, now they are not numbers. Now they are not numbers. Now they are two strings. और जब दो स्ट्रिंग्स के ऊपर आप प्लस ऑपरेशन अप्लाई करते हो तो यू डोंट गेट एन एरर, यू गेट अ कॉन्कैटिनेटेड वैल्यू. दिस इज कॉल्ड अ स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन. तो स्ट्रिंग में क्या हो सकता है? स्ट्रिंग में क्या हो सकता है? आपके पास दो वर्ड्स है, उसको आप जो जोड़ दोगे तो वो दोनों वर्ड्स कंबाइन होके एक बड़ा वर्ड बन जाएगा, राइट? सो व्हेन आई डू 5 and 3, आई डोंट गेट 8, आई विल गेट 53. आई विल गेट 53, 5 3, बिकॉज वो स्ट्रिंग्स बस जुड़ जाएंगे. दिस इज कॉल्ड अ स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन. दिस कॉल्ड अ स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन. देयर इज नो मैथ्स, देयर इज नो अरिथमेटिक्स हियर. 5 3 दोनों स्ट्रिंग है, अटैच कर दो, 5 3 बन जाएगा. एज सिंपल एज दैट, राइट? इफ आई ट्राई द अदर वे राउंड, अगर मैं 5 3 की जगह कुछ और लिखता, हेलो, और यहां पे मैं लिख दूं वर्ल्ड. अब ये दो वर्ड्स है, दो वर्ड्स है, हेलो वर्ल्ड. व्हेन आई डू a plus b, व्हाट इज द आउटपुट आई एम गोइंग टू गेट? ये जुड़ जाएंगे दोनों, ये दोनों वर्ड्स जुड़ जाएंगे, आई एम गोइंग टू गेट हेलो वर्ल्ड. हेलो वर्ल्ड, राइट? सो डज डेटा टाइप मैटर? यस. डज डेटा टाइप मैटर? Yes, it does matter. Correct? Now, quickly, we have understood a little bit around, again, quick revision. What are A and B? What are A and B? A and B are called as, A and B are called as variables of type string. Correct? Eh? Variables have of type string. Now, one thing about variables, you should be very clear. अगर मैं लिख दूं a equal to 5, अगर मैं लिख दूं a equal to 5, और उसके बाद मैं लिख दूं a equal to 3, और उसके बाद if I write print a, what is the output that I'll get? Or will I get an error? I told you in the beginning, variables का मतलब ही ये होता है कि वैल्यू चेंज हो सकती है. So the value of a can change. The value of a can change and it has changed. तो पहले a की वैल्यू क्या थी? 5. अभी a की वैल्यू क्या है? 3. So when I'm printing a, what is the code execution order from top to bottom? From top to bottom. So line number 1, a was 5. Line number 2, a became 3. Line number 4, when I went to print a, what is the latest value of a? 3. So the output that I'm going to get is 3. But if I write this print statement, if I write this print statement again here, now what will be my output? Now there are two print statements. Now there are two print statements. I'll get 5 and then I'll get 3. A is 5, so 5 will get printed. Then A is changed to 3, 3 will get printed. So I'll get 5 and 3. So हमने बेसिक वेरिएबल्स बनाना सीखा है. वी हैव अंडरस्टूड हाउ यू कैन क्रिएट बेसिक वेरिएबल्स, राइट? तत्वज्ञ इज सेइंग दैट यू कैन आल्सो यूज कॉमा. यस. तो जब आप प्रिंट स्टेटमेंट यूज करते हो, सो यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स विद इट, राइट? सो फॉर एग्जांपल, लेट मी से a is equal to 5 and b is equal to 3. If I want to print both on the same line, if I want to print both on the same line, I can also write it like this, a comma b. आई कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस, ए कॉमा बी. तो ए और बी दोनों एक ही लाइन पे प्रिंट हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे एक कॉमा है. सो बाय डिफॉल्ट देयर विल बी अ स्पेस दैट इज एडेड. तो डिफॉल्ट सेपरेटर स्पेस है. जब भी आप कॉमा डालोगे तो यहाँ पे एक स्पेस आएगी. लेट मी ऐड वन मोर वेरिएबल, सी इज इक्वल टू 10, ए कॉमा बी कॉमा सी, 5 3 10, 5 3 10. Yeah, so we are able to do this. Awesome. Awesome. Print AB क्या तो? See, now if you write like this, AB, तो इसका मतलब क्या है? It is trying to see if AB is a variable. क्या AB कोई वेरिएबल यहाँ पे डिफाइंड है? AB नाम का क्या कोई वेरिएबल यहाँ पे डिफाइंड है? नहीं, नहीं. So you'll get an error. So you'll get an error. Name AB is not defined. AB नाम का कोई वेरिएबल यहाँ पे डिफाइंड नहीं है. A नाम का है, B नाम का है, बट AB नाम का कोई वेरिएबल नहीं है. So we cannot print AB because that name does not exist. Cool. So we have learned about some basic operators. So let's see all the different arithmetic operators that you have. Let us try to see all the different arithmetic operators. There are different form of operators. The basic ones, addition, multiplication,
subtraction, division, all these are called as arithmetic operators. So I'll just try to show you. Print आपको already पता है a plus b. Print, let's also do a minus b. We can also do print a multiplied by b. Okay, a multiplied by b. How do I write a divided by b? Can anyone tell me? Division, division, division. Yeah, you can use the slash symbol. Print a divided by b. Yeah, front slash. Yeah, yeah. Okay. A डिवाइड बाय बी. पहले टेस्ट कर लेते हैं. 5 + 3 is 8, correct. 5 - 3 is 2, correct. 5 multiplied by 3 is 15, correct. 5 divided by 3 is 1.666667, right? Okay. How about yeah, modulo operator. So we have one operator in Python called as the modulo operator, which gives you the remainder, तो ये जो आप कर रहे हो a डिवाइडेड बाई b, आपको जो आंसर मिल रहा है, दिस इज मोर लाइक योर क्वोशंट, दिस इज द आंसर दैट यू गेट आफ्टर डिवीजन. बट व्हेन आई डिवाइड a डिवाइडेड बाई b, व्हाट इज द रिमाइंडर? क्या कोई बता सकता है कि जब मैं 5 डिवाइडेड बाई 3 करता हूं तो मुझे रिमाइंडर क्या मिलता है? जब मैं 5 डिवाइडेड बाई 3 करता हूं तो रिमाइंडर क्या मिलता है? 2, करेक्ट. रिमाइंडर इज 2, सो आई विल गेट 2, एंड दिस इज कॉल्ड एज मॉड्यूलो ऑपरेटर. दिस परसेंटेज सिंबल इज कॉल्ड एज मॉड्यूलो ऑपरेटर. व्हाट इज इट कॉल्ड एज गाइस? इसको क्या बोलते हैं? मॉड्यूलो ऑपरेटर. और ये होता क्या है? ये रिमाइंडर देता है आपको. ए मॉड्यूलो बी गिव्स यू द रिमाइंडर व्हेन यू डिवाइड ए विद बी. जो आपको रिमाइंडर बचता है, 5 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 1 जा 3, रिमाइंडर कितना बचेगा? 2. रिमाइंडर कितना बचेगा? 2. दैट इज योर मॉड्यूलो ऑपरेटर. 5 डिवाइडेड बाई 3, 2 इज द रिमाइंडर. 2 is the remainder. Awesome. Awesome. Yeah, I'm coming to the next one as well. Yeah. Um, integer division. Yes. Sir, जब हम डिवीजन करते हैं तो आपने खुद अभी बोला कि 3 1s are 3 and 2 is the remainder. That means जो quotient हम नॉर्मली लिखते थे बचपन में डिवीजन, उस केस में our quotient used to be an integer. So if I want my answer as an integer, डिवीजन के केस में अगर मुझे इंटीजर आंसर चाहिए, not in the form of decimal, I want an integer answer, then what do I do? Then I use floor division. A double slash b, and I will get 1. तो ये वाला जो डेसिमल वाला पार्ट है, ये पूरा ट्रंकेट होगा. नाउ यू विल नॉट गेट दिस, राइट? सो टू वेज टू डिवाइड टू ऑपरेटर्स फॉर डिवीजन इन पाइथन. एक रेगुलर डिवीजन हो गया और एक फ्लोर डिवीजन. फ्लोर डिवीजन में क्या होता है? फ्लोर डिवीजन में आंसर इज ऑलवेज एन इंटीजर. अगर आपको डिवीजन करने के बाद हमेशा आंसर इंटीजर में चाहिए तो आप क्या यूज करोगे? फ्लोर डिवीजन यूज करोगे. फ्लोर डिवीजन यूज करोगे. नाउ लेट्स क्विकली ट्राई टू डू दिस. मैं यहाँ पे 2 नंबर्स लिखता हूँ. लिख रहा हूं मैं. लेट मी राइट 5 divided by, 5 and 4. You tell me all the values. 5 and 4. You tell me all the values. ऊपर से नीचे तक सारे values बताओ. 5 + 4, 5 - 4, 5 × 4, 5 divided by 4, 5 floor division 4. All values in one message. All values in one message बोला मैंने. All values in one message. बोला मैंने. किसी का भी नहीं है अभी तक. All values in one message अभी तक किसी का भी नहीं है. Yes, I think first one is Gulshan. 9 1 20 1.251. Yes, I think you are correct. Gulshan is correct. I think yes. अभी बहुत everyone, most of you are correct. So when I run this, I should get 5 + 4 9, 5 - 4 1, 5 multiplied by 4 20, 5 divided by 4 1.25, 5 floor division. तो 5 divided by 4, 4 1s are 4, इंटीजर वैल्यू तो 1 आएगी.
इंटीजर वैल्यू 1 आएगी। एंड 5 मॉड्यूलो 4, 5 को 4 से डिवाइड करूंगा, 4 1 जा 4, व्हाट इज द रिमाइंडर? 1। सो रिमाइंडर इज 1। एक और एरिथमेटिक ऑपरेटर हमने अभी मिस कर दिया है। एक और एरिथमेटिक ऑपरेटर अभी हमने मिस कर दिया है। एंड दैट एरिथमेटिक ऑपरेटर इज exponentiation, or you can also say the power operator. Exponentiation is the correct word. मुझे लिखना है 3 की पावर 5 or something like that. A की पावर B. So how do I write? Print A double asterisk B. So this is exponentiation बोलते हैं इसको, और सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हैं A raised to the power B. A raised to the power B. So यहाँ पे होगा 5 raised to power 4. 5 raised to power 4, इसका मतलब कुछ ऐसा होगा, 5 raised to the power 4। क्या आंसर आएगा? 5 raised to the power 4 का आंसर क्या आएगा? कितना आएगा? 625? 625, yes, you are right। 5 raised to the power 4, 625। Okay, okay, cool। We'll do one last quick check, okay? Um, print 5 modulo 5, बताओ आंसर क्या आएगा? प्रिंट 5 मॉड्यूलो 5, 5 मॉड्यूलो 5। अरे 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? नॉट वन, नॉट वन। मॉड्यूलो इज रिमाइंडर गाइस। मॉड्यूलो का मतलब रिमाइंडर, डिवीजन नहीं किया हमने, रिमाइंडर बोला है। जीरो, जीरो इज द करेक्ट आंसर, जीरो इज द करेक्ट आंसर, जीरो इज द करेक्ट आंसर। प्रिंट, प्रिंट 2 एक्सपोनेंशिएशन 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 3 8, करेक्ट। नेक्स्ट, प्रिंट, प्रिंट ओके 5 फ्लोर डिवीजन 2, 5 फ्लोर डिवीजन 2। फ्लोर डिवीजन में आंसर इज ऑलवेज एन इंटीजर। फ्लोर डिवीजन में आंसर इज एन इंटीजर। डिवीजन करना है बट इंटीजर वाला पार्ट ही बताओगे आप, डेसिमल वाला पार्ट हटा दोगे। तो आंसर आएगा 2.5, बट फ्लोर डिवीजन के केस में फाइनल आंसर विल बी 2। रियल आंसर इज 2.5, बट हम फ्लोर डिवीजन कर रहे हैं, राइट? अगर ये सिंगल डिवीजन होता तो आता 2.5, आता 2.5, बट व्हेन आई डू फ्लोर डिवीजन आई गेट द इंटीजर वैल्यू, so I will get the answer as 2। I get the answer as 2। Awesome, 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 awesome। Guys, guys, क्या आपको अभी तक मजा आ रहा है? Are you enjoying so far learning programming from scratch? So we have understood about variables. We have understood about variables. Now we can define certain numbers. We can do a lot of mathematical operations. मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। Yes, I am also enjoying। I am also enjoying। क्या हम एक लेवल आगे लेके जाए इसको? Yesterday we had created accounts on a few platforms. Should we start solving some problem on these platforms? Should we start doing that? Yes? Yes. So I'll be sharing a few question links in the chat. I'll be sharing a few question links in the chat, right? So let's start with the first question. Let's start with the first question, which I'm going to paste in the chat, and we are going to solve this on Code Chef. Code Chef. Yes, Nilesh. ओपन दिस। आपने कल अगर अपना अकाउंट बनाया है तो आपको ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट ओपन करना है। नोट, आई डेंट गेट व्हाट यू मीन नितेश। फोन वाले क्या करे? देखो देखो देखो, बस देखो। फोन वाले क्या करे देखो, समझो। जब आपके पास लैपटॉप आएगा तब आप ओपन करना, तब आप ओपन करना। यस। नो वरीज अमीश, नो वर। अच्छा, किसी ने अगर क्लास लेट ज्वाइन किया है, डू नॉट वरी, डू नॉट वरी, यू विल गेट द रिकॉर्डिंग ऑफ द क्लास। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यू विल गेट द रिकॉर्डिंग ऑफ द क्लास। ओके। वाई 5?
फ्लोर डिवीजन टू कैनॉट बी थ्री। तत्वज्ञ, तो हम ना वहां पे फ्लोर डिवीजन इसलिए बोल रहे हैं कि आपको लोअर साइड पे, ऐसे समझो अगर आप राउंड कर रहे हो तो लोअर साइड का इंटीजर आपको लेना है, अपर साइड का नहीं। 2.5 तो नीचे वाला नंबर लेना है, विच इज 2। नीचे वाला नंबर लेना है आपको। ठीक है, कूल। गाइज, आर यू एबल टू सी द प्रॉब्लम स्टेटमेंट? आर यू एबल टू सी द प्रॉब्लम स्टेटमेंट? लिंक once again, okay, I'll put once again. Everyone is able to see the problem statement, yes or no? पहले देखो, पहले करो मत आप कुछ, पहले कुछ मत करो, प्लेटफॉर्म देखो। इस प्लेटफॉर्म पे ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, ढेर सारे क्वेश्चंस हैं जिनको हमें सॉल्व करना है। तो व्हाट डज दिस क्वेश्चन से? दिस क्वेश्चन सेज दैट शेफिना, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। शेफिना decided to move into chef's apartment. Chef was initially paying a rent of X rupees. Since Shefina is moving in, the owner decided to double the rent. The owner decided to double the rent. अच्छा, तो जो भी रेंट था एक्स, अब वो डबल हो गया है। तो हमें बताना है कि फाइंड द फाइनल रेंट दैट शेफ नीड्स टू पे। तो थोड़ा सा और समझते हैं इसको, थोड़ा सा और समझते हैं इनपुट में क्या दिया है। इनपुट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल इंटीजर एक्स डिनोटिंग द रेंट शेफ वाज इनिशियली पेइंग। आउटपुट ऑन अ न्यू लाइन द फाइनल रेंट दैट शेफ नीड्स टू पे। बहुत सिंपल प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। दे आर सेइंग कि बॉस, शेफ नाम का एक बंदा एक घर में रहता था, उसका रेंट पहले एक्स था, अब से उसका रेंट डबल हो गया है। तो रेंट कितना होगा ये आपको बताना है। तो अभी, तो जैसे अगर इनपुट में टू है, अगर पहले उसका रेंट टू था, तो अब उसका रेंट कितना हो जाएगा? फोर हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 2x, करेक्ट? 2x। अगर उसका पहले रेंट थ्री था, तो अब कितना हो जाएगा? सिक्स हो जाएगा। सो यू ऑल आर करेक्ट। द आंसर इज एक्चुअली 2x। द आंसर इज एक्चुअली 2x। बट देर इज अ प्रॉब्लम हियर। देर इज अ प्रॉब्लम हियर, राइट? देर इज अ प्रॉब्लम। आई कैनॉट राइट लाइक दिस। मैं यहाँ पे ऐसा नहीं लिख सकता x इज इक्वल टू टू, एंड आई कैनॉट राइट प्रिंट 2x, 2 टाइम्स x, 2 मल्टीप्लाइड बाय x। आई कैनॉट राइट दिस, आई कैनॉट राइट दिस, क्योंकि ये जो x है ये एक वैल्यू है, राइट? बट हम जब यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं तो हमें एक जनरलाइज्ड सॉल्यूशन लिखना होता है जो किसी भी इनपुट पे चले। हमें एक जनरलाइज्ड इनपुट ऐसा सॉल्यूशन लिखना है कि वो सॉल्यूशन एक इनपुट लेगा और आउटपुट देगा, विच मीन्स वी आर रिक्वायर्ड टू टेक इनपुट, वी आर रिक्वायर्ड टू टेक इनपुट एंड परफॉर्म ऑपरेशन ऑन टॉप ऑफ दैट। सर ये तो आपने सिखाया नहीं। एग्जैक्टली exactly. मुझे आपको बताना था कि लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन यू आर राइटिंग कोड, व्हेन यू आर प्रोग्रामिंग, आपको यूजर से इनपुट लेना होता है। आप नहीं डिसाइड कर सकते। सो अभी तक जो हम प्रैक्टिस कर रहे थे, वी वर जस्ट पिकिंग रैंडम वैल्यूज। ए इज इक्वल टू फाइव, कुछ भी वैल्यूज हम पिक कर रहे थे, ए इक्वल टू फाइव। पर जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहां पे वो क्या बोलेगा? यूजर ने जो इनपुट दिया है, जो इनपुट आएगा उसके ऊपर सॉल्व करो। तो नाउ हाउ डू आई डू दैट? अब मैं ये कैसे करूं? मैं यूजर से इनपुट कैसे लूंगा? दैट इज द चैलेंज, राइट? इफ आई से कि आई वांट टू राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, इट्स वेरी इजी। एक्स इज इक्वल टू फाइव, फाइव का स्क्वायर कितना होगा? एक्स इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स, फाइव स्क्वायर 25 हो गया। बट प्रॉब्लम क्या है कि एक्स की वैल्यू मैंने फाइव हार्ड कोड की है, बट वो सिक्स भी हो सकती थी, यस। वो सेवन भी हो सकती थी, यस। तो इसीलिए वी नीड टू हैव अ वे टू कैप्चर द इनपुट, एंड उसके लिए हम यूज करेंगे एक इनपुट फंक्शन। उसके लिए हम यूज करेंगे इनपुट फंक्शन। तो यहां पे x लिखने की बजाय, यहां पे x लिखने की बजाय मैं यहां पे लिखूंगा इनपुट विथ ब्रैकेट्स। आई टोल्ड यू कि जब जब हम कोई फंक्शनैलिटी पाइथन की यूज करते हैं, वी यूज दिस ब्रैकेट्स। दिस ब्रैकेट्स टेल अस दैट दिस इज अ पर्टिकुलर फंक्शन। और इनपुट फंक्शन क्या करता है? आपको इनपुट लेने में मदद करता है, आपको इनपुट लेने में मदद करता है, राइट? यू कैन ऑल्सो पुट अ इनपुट प्रॉम्प्ट। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरी बात। यू कैन ऑल्सो पुट अ इनपुट प्रॉम्प्ट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एंटर अ नंबर, x इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू इनपुट, और उसके साथ मैंने एक इनपुट प्रॉम्प्ट लिख दिया, एंटर अ नंबर। और फिर जो भी नंबर इनपुट में आएगा मैं उसको प्रिंट कर दूंगा। अ वेरी बेसिक प्रोग्राम। इनपुट अ नंबर, और जो भी नंबर आएगा मैं उसको यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा। या इज इट पॉसिबल? यस। टेक अ नंबर एंड टेक अ नंबर एज इनपुट, एंड उसको प्रिंट कर दो। तो अब हम रन करेंगे,
सर बट वी हैव टू डिफाइन इनपुट। हाँ, तो आई विल टेल यू दिस, राइट, धीरे धीरे करेंगे। तो अब मैं यहाँ पे रन करता हूँ। नाउ आई रन। सो आई सी आउटपुट बार में एंटर अ नंबर, मुझे यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट आया, एंटर अ नंबर। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ 5 और मैं एंटर क्लिक करता हूँ। सो आई कैन सी आई एम गेटिंग द आउटपुट एज 5। आई एम गेटिंग द आउटपुट एज 5। बट yeah, listen to me carefully. Now the challenging part here is, अगर आप ध्यान से देखोगे कि ये जो x है, ये x है, just try to print the type of this x. Take a guess. टेक अ गेस, वो क्या होगा? टेक अ गेस, वो क्या होगा? हम जो भी चीज इनपुट ले रहे हैं उसका बाय डिफॉल्ट टाइप क्या होगा? इंटीजर, स्ट्रिंग? Yeah, so this is what you need to understand, that the default input type, data type is string. यानी आप कोई भी चीज पाइथन में जब इनपुट लेते हो तो वो स्ट्रिंग फॉर्म में ही इनपुट जाता है। ऑलवेज आप कोई भी चीज पाइथन में इनपुट लेते हो, आप कोई भी चीज पाइथन में इनपुट लेते हो, इट गोज एज अ स्ट्रिंग। So the problem is when I run this program, I'll maybe put a colon here, something like this, and I run this. तो ये बोल रहा है एंटर अ नंबर, मैंने यहाँ पे लिखा 7 और मैंने एंटर किया तो ये बोल रहा है क्लास स्ट्रिंग। तो वो बोल रहा है मुझे कि ये जो एक्स आपने इनपुट लिया है, व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ एक्स? व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ दैट एक्स? इट इज अ स्ट्रिंग। द डेटा टाइप ऑफ एक्स इज अ स्ट्रिंग। बट हमने तो नंबर लिया था, तो स्ट्रिंग कैसे आया? हमने तो यहाँ पे इनपुट में हमने एक नंबर इनपुट दिया था 7, यहाँ पे एंटर नंबर, मैंने 7 प्रेस करके फिर एंटर किया था। तो फिर स्ट्रिंग कैसे आया? बिकॉज दैट इज द डिफॉल्ट डेटा टाइप। नो, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर कोट्स। ये कोट्स में अगर हटा भी दूं और सिर्फ इनपुट भी लिखूं, वो बस एक प्रॉम्प्ट है, राइट? तो मैं रन करूंगा तो यहाँ पे वो कर्सर होगा, यहाँ पे मैं 7 एंटर करूंगा तो वो मुझे बताएगा 7 इज अ स्ट्रिंग। यस अर्पिता। So I'm saying that we use the input function to capture an input from the user. जब आप एक प्रोग्राम लिखते हो तो इनपुट आउटपुट बेस्ड होगा ना वो प्रोग्राम। कुछ इनपुट वो लेगा, प्रोसेसिंग करेगा एंड आउटपुट देगा। तो वो इनपुट आपको यूजर से कैसे लेना है? यूजिंग द इनपुट फंक्शन। यूजिंग द इनपुट फंक्शन आपको उसको इनपुट लेना है। यस। बट मेरा क्वेश्चन अभी ये है कि मैंने जब इसको 7 इनपुट दिया, व्हेन आई हैव गिवन द इनपुट एज 7 एंड आई हैव प्रेस्ड एंटर, so why am I getting class string? Yes, but you are writing 7 on the output side. Manan, yes. So when the program is executed, इट इज एक्सपेक्टिंग कि ये जब लाइन चलेगी तो आपका प्रोग्राम तभी आगे बढ़ेगा जब आप उसको एक इनपुट दोगे। तो अभी क्योंकि प्रोग्रामर भी मैं ही हूं और यूजर भी मैं ही हूं, तो मैं एक साइड पे प्रोग्राम लिख रहा हूं और एक साइड पे उसको यूज कर रहा हूं। आई यू अंडरस्टैंडिंग दिस? आई यू अंडरस्टैंडिंग दिस मानन? आई यू अंडरस्टैंडिंग? मैं प्रोग्राम भी मैं ही लिख रहा हूं और उसको यूज भी मैं ही कर रहा हूं। तो लेफ्ट साइड इज द प्रोग्राम दैट आई हैव रिटन एंड राइट साइड इज आई एम यूजिंग द प्रोग्राम। आई एम यूजिंग द, हमारा जो यूजर होगा जो इसको यूज करेगा तो उसको इंटरफेस में दिखेगा ना एंटर अ नंबर, तो वो एक नंबर टाइप करेगा। ये कोड नहीं दिख रहा है मान के चलो उसको। यस, राइट। सो द यूजर विल पुट अ नंबर, इट कैन बी एनी नंबर। Yes, it can be any number. So every time I run this, I can put any number. I can put 9. It is giving me class string. The question is, why am I getting string and not integer? Because listen to me, because the input function, whenever you are using the input function, the default data type of the input function is a string. That's it. इनपुट फंक्शन से कुछ भी आप इनपुट लोगे, स्ट्रिंग ही आएगा। इनपुट फंक्शन से कुछ भी इनपुट लोगे, स्ट्रिंग ही आएगा। कैन वी चेंज इट? यस। कैन वी चेंज इट? यस। यस। या, स्ट्रिंग ही आएगा। क्या मैं स्ट्रिंग से इंटीजर बना सकता हूं? बना सकता हूं। बट क्या वो हमेशा स्ट्रिंग आएगा? यस, हमेशा स्ट्रिंग आएगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? एवरी टाइम यू यूज द इनपुट फंक्शन, जो भी आपको डेटा मिलेगा वो इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग ही मिलेगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यस, दैट इज क्लियर।
तो अब मुझे बताओ, इफ x इज इक्वल टू इनपुट, y इज इक्वल टू इनपुट, तो व्हाट इज द टाइप ऑफ x एंड y? व्हाट इज द टाइप ऑफ x एंड y? x is equal to input, y is equal to input. What is the type of x and y? String. Very good. वेरी गुड. अब मैं यहाँ पे प्रिंट x प्लस वाई लिख रहा हूं. मैं यहाँ पे प्रिंट x प्लस वाई लिख रहा हूं. और मैं प्रोग्राम को चलाऊंगा, इस प्रोग्राम को चलाऊंगा. और यहाँ पे मैं फर्स्ट नंबर दे रहा हूँ 6, एंटर. सेकंड नंबर दे रहा हूँ 7. अब जब मैं एंटर करूंगा तो आंसर क्या आएगा बताओ? 6 और 7 लिख के जब एंटर करूंगा तो आंसर क्या आएगा? 13 नहीं आएगा गाइस. 13 नहीं आएगा. अब भी हमने डिस्कस किया एक्स एंड वाई आर स्ट्रिंग्स. एक्स एंड वाई आर स्ट्रिंग्स. तो व्हेन आई एम प्रिंटिंग समथिंग लाइक दिस, 6 + 7. व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस? इसका आंसर क्या है? 6 + 7 का आंसर क्या है गाइस? 6 + 7 का आंसर क्या है? स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन. स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन 67. तो अगर ये दोनों स्ट्रिंग्स है, तो जब मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा तो 6 7 आएगा. 6 7. यस, आई एम गेटिंग 6 7. आई एम गेटिंग 6 7. ये बस एक कंफर्मेशन था आपको बताने के लिए कि एवरी टाइम यू टेक द इनपुट इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग. एवरी टाइम यू टेक एन इनपुट इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग. एंड व्हेन यू एड इट, होता क्या है? स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन होता है. या स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन होता है. नाउ, नाउ सर, I want to convert this integer into int. I want to convert this particular input into int. Sir, can I do that? Sir, can I do that? Yes. Yes. So I do typecasting. जब आप किसी भी एक वेरिएबल को एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हो तो उसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग. क्या बोलते हैं उसको? When you want to convert the value of a variable from one data type to another data type, we call we call it typecasting. Typecasting, converting from one type to another type. Converting from one type to another type. So right now my x is in the form of a string. I want to convert it into an integer. So I will use a typecasting function int, and I will surround the input with this int function. I will surround this input, whatever is this input, okay? Whatever is this input, let's imagine there is a 7 here. Imagine there is a 7 string here. This 7 string is surrounded with a typecasting function int. Typecasting function int, so that input gets converted. This input gets converted to an integer. This input gets converted to an integer. Same thing I will do for y. This input was a string. Maybe it will look something like this, 8. This input was a string 8. But whatever input I am getting, I am converting it into an integer with the help of this typecasting function int. With the help of this typecasting function int, I am able to convert that input into an integer. So now when I write x plus y, what is the output I'm going to get? Now when I write x plus y, 6 + 7. Now when I do 6 + 7, 6, 7. When I press enter, what am I going to get? 13, 13, 13, 13, 13. Why fear? Why fear? Why fear? Anyone knows the signature line? No one knows the signature line. No one knows the signature line. Why fear when glad answer is here? Yes. Why fear when glad answer is here? Yes. Yes. So typecasting is very easy. You can convert from any data type to any data type. It is possible. You can do that. So I can convert a string into an integer. It is possible. When I can convert an integer into a string, I can convert a string into an integer. It is possible. It is possible. Yeah, perfect. Okay. So x is equal to, Jivesh, I got your joke. It's fine. Okay. X is equal to 7. Let me write something like this. X is equal to 7. Now I typecast this 7
into a string and I store it into y. So when I write y is equal to, and instead of int, this time I will be using str because now I'm converting an integer into a string. So I write y is equal to strx. And now when I try to print the type of y, can you tell me what will be the answer? 7 was an integer. 7 is now converted into a string. And now when I try to print the type of y, I am going to get a string. Yes, possible, possible. Let's try one more scenario. So let's say I have a, which is an integer value 5, and I have a b, which has an integer value 7. Okay. What will happen if I convert a to float value? So let me do c is equal to float a, and let me try to print c. Can you guess what will be the value of c? Can you guess what will be the value of c? 5.0. तो कल नहीं, थोड़ी देर पहले हमने ये देखा था कि float value is basically a decimal representation, right? So you will get the answer in a decimal representation. So a as an integer, if I look at it, it's 5. But when I convert it into a float, now it's 5.0. Now it is 5.0. तो a is equal to 5. ये एक इंटीजर था, बट जब c बन गया तो c 5.0 बन गया, which is a float value. So there are different typecasting functions. ठीक है, आपको किसी को भी इंटीजर बनाना हो, so you will use the int typecasting function. आपको किसी को string बनाना हो, तो you will use str. आपको किसी को float बनाना हो, तो you will use float. आपको किसी को boolean बनाना हो, तो you will use bool. These are some of the typecasting function. If you want to convert something to an integer, use int. If you want to convert something to a string, use str. If you want to convert something to float, use float. If you want to convert something to bool, use bool. Okay, now you guys tell me. Now you guys tell me. Now you guys tell me. Sir, what will happen? Sir, what will happen if I have a word hello and I try to convert this into a bool? I try to convert this into a Boolean value, which can only be true or false. What will happen? I am trying to convert hello into true or false. Error. A lot of you are saying error. Print B. I am trying to convert hello into a Boolean value. Boolean value, so it can either be true or false. It can either be true or false. You can take a guess. So the answer you are getting is true. And why are we getting true? Very simple reason. So Boolean can either be true or false. So when you give a string, when you give a string and ask it, no, so default is not true, Ashish. Listen to me. When you give a string and you ask it to convert it into a Boolean, matter नहीं करता. Hello है, world है, hi, hello, Python, Gladden. You write anything in that string, that doesn't matter. It can only see two things. Is it empty or is it not empty? If it is empty, it will treat it as false. If it is not empty, it will treat it as true. So is this string empty or non-empty? ये जो string है, ये क्या empty है? Empty मतलब ऐसा. This is an empty string. This is an empty string. But जब मैंने hello लिखा है, तो ये non-empty है. ये non-empty है. It is a non-empty string. मतलब उसमें characters है. अगर characters है, वो string जिंदा है. मतलब you can think like this. Boolean things like this. अरे इसके पास तो 5 characters है. This string is alive. This string is alive. This is a true. This is a true string. This string, when I convert, for me, it is a non-empty, so it is true. But if it was an empty string, zero characters, what will happen if I try to convert an empty string into Boolean? Empty will translate to false. तो जब मैं empty string को Boolean बनाऊंगा तो false आएगा. Okay, one more scenario. Hello का integer क्या बनेगा? Now this is really challenging. Hello का print int word, या ऐसे लिख लेते हैं x is equal to int word. हेलो का इंटीजर कैसे बनेगा? हेलो का इंटीजर, हेलो का इंटीजर, हेलो का इंटीजर. What will be the integer? How will I convert a string to an integer? I cannot.
I cannot, so I get an error. Invalid literal for int with base 10. इट इज एक्सपेक्टिंग कि इस इंट के अंदर आपने कुछ ऐसी वैल्यू लिखी है जो न्यूमेरिक होनी चाहिए। वो न्यूमेरिक होगी तो वो उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर पाएगा। दिस इज नॉट अ न्यूमेरिक वैल्यू। दिस इज नॉट अ न्यूमेरिक वैल्यू। हेलो एक न्यूमेरिक वैल्यू है ही नहीं तो मैं उसको इंटीजर कैसे बनाऊं? ट्राई टू अंडरस्टैंड। हेलो, नाउ अगेन आप बोलोगे कि सर, बट इन द प्रीवियस केस यू सेड एम्प्टी नॉन एम्प्टी, नाउ यू आर सेइंग हेलो शुड बी न्यूमेरिक। So, sir, you are making your own rules. I am not making my own rules. Python has made the rules, जिसको हम syntax बोलते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ। I am telling you the rules of Python. We cannot change it. We can just understand and follow it. तो ये रूल है ना? So we cannot do anything about it क्योंकि आपने यहाँ पे न्यूमेरिक डेटा नहीं डाला, आपने यहाँ पे HELLO डाला है एंड आप उसको इंटीजर बनाने की कोशिश कर रहे हो तो वो नहीं बना सकता उसको इंटीजर। अच्छा, बट व्हाट इफ आई राइट 2026, 2026 और मैं इसको ईयर लिख देता हूँ, ईयर 2026। कैन दिस बी कन्वर्टेड इनटू एन इंटीजर? कैन दिस बी कन्वर्टेड इनटू एन इंटीजर? यस, इट कैन बी। दिस इज अ स्ट्रिंग, it can be converted into an integer. So the output that I get is 2026, and this is an integer. I can show you the type of x. I can show you the type of x. This is an integer. This is an integer. The type of x is class int. Perfect. Perfect. So I can do that. Quick. Let's go back. Let's go back. हमारा क्वेश्चन था रेंट। रेंट, शेफ इनपुट वाज एक्स। शेफ का रेंट एक्स था। तो अभी हमें सॉल्व करना है। नाउ वी हैव अंडरस्टूड कि इनपुट ले सकते हैं, इनपुट को कन्वर्ट भी कर सकते हैं, राइट? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? शेफ हैज इज पेइंग अ रेंट ऑफ एक्स रुपीज। नाउ द रेंट हैज इंक्रीज्ड तो मतलब डबल हो गया रेंट। रेंट अभी डबल हो गया तो आउटपुट कितना आएगा? So for 2 input, you are getting 4. For 3 input, you are getting 6. For 10 input, you are getting 20. For 10 input, you are getting 20. तो उसका क्या मतलब? How will you solve this problem? Take the input, take the input, take the input, double it and print it. Yes or no? Take the input, double it and print it. Yes or no? Yes, यही तो करना है हमें। यस, यही तो करना है। सो लेट्स टेक द इनपुट। तो रेंट को हम एक्स मान के चलते हैं, ठीक है? रेंट को हम एक्स मान के चलते हैं। एक्स इज इक्वल टू इनपुट, ठीक है? अब जो भी इनपुट हमें मिला है उसका टू टू टाइम्स करके हम प्रिंट कर देंगे, 2 into x। तो क्या ये सही है? क्या ये सही है? हमने एक गलती कर दी इसमें। समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज रॉन्ग। एक्स इनपुट जो हमें मिलेगा उसका डेटा टाइप क्या है? इंटीजर। वेरी गुड, दिस इज एन इंटीजर। बट व्हाट इज द डिफॉल्ट डेटा टाइप ऑफ इनपुट? डिफॉल्ट डेटा टाइप इनपुट का क्या होता है? स्ट्रिंग होता है। तो इस स्ट्रिंग को पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इनपुट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंट लगाना पड़ेगा। तो पहले मैंने इनपुट लिया, उसको इंट में कन्वर्ट किया। आई एम टेकिंग, आई एम एक्सेप्टिंग एन इनपुट, आई एम एक्सेप्टिंग एन इनपुट, कन्वर्टिंग इनटू एन इंटीजर, कन्वर्टिंग इनटू एन इंटीजर, देन स्टोरिंग इट इन एक्स। So now x is an integer or a string? Now x is an integer or a string? Int. So can I do 2 into an integer? Yes. Can I do 2 into an integer? Yes, I can do that. 2 multiplied by an integer, yes, it is possible. So now I can print rent डबल होने के बाद वैल्यू क्या होगी ये मैं पता कर सकता हूं। सो आई हैव रिटन माय कोड। नीचे आपको दिखेगा एक रन बटन, आपको क्लिक करना है रन बटन के ऊपर और आपका अभी एक टेस्ट केस सैंपल इनपुट 2 पे आपका आंसर 4 आ रहा है। क्या ये मैच कर रहा है? 2 पे आंसर 4 आना चाहिए था। 2 पे मेरा प्रोग्राम जब चल रहा है तो मेरा आंसर भी 4 आ रहा है। यस, so my solution is working correctly with this test case. So now what do? I click on submit. I click on submit. Now it will validate multiple inputs के लिए वो validate करेगा। इसमें बहुत सारे सब tasks होते हैं। Just think of this like cases. Just think of this like multiple cases. हमने क्योंकि यहाँ पे एक इनपुट लिया है तो यहाँ पे नीचे बहुत सारे केसेस होंगे, राइट? ऐसे केसेस होंगे। 37, उसका आंसर 74, आपका आया क्या? यस, करेक्ट। 91, उसका आंसर 182 आया क्या? यस। So these are all different cases and the expectation is your code will run against multiple test cases. Your code will run against multiple test cases and सब में वो पास होना चाहिए, सब में वो पास होना चाहिए। अगर वो पास हो गया तो आपका सॉल्यूशन करेक्ट है।
In our case, it has passed. All the test cases have passed. Just think of it like this. इस प्रोग्राम पे उन्होंने 10 डिफरेंट इनपुट्स डाले. इस पर्टिकुलर प्रोग्राम पे उन्होंने 10 डिफरेंट इनपुट्स डाले और सबका जवाब सही आया. That means all test cases passed. Are you understanding the meaning of test case, guys? Are you understanding the meaning of test case? ऐसे टेस्ट केस होंगे, ऐसे टेस्ट केस होंगे कि 37 है, आंसर 74 आना चाहिए. दूसरा टेस्ट केस है 36, उसका आंसर 72 आना चाहिए. राइट नाउ व्हेन आवर प्रोग्राम विल रन, 37 हमारा कन्वर्ट होके क्या आएगा, आंसर हमारा 2x है. 37 पे हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर क्या आएगा 37 पे, 74 ही आएगा. And the expected answer was also 74. Matches. Your answer and correct answer matches. So test case passed. Right? Let's say next test case is 36 और उस पे आंसर आएगा 72. उसके आंसर आना चाहिए 72. जब 36 इनपुट गया तो हमारे प्रोग्राम ने आंसर क्या दिया, 72. मैच. टेस्ट केस पास्ड. तो एक्सपेक्टेड आउटपुट और हमारा आउटपुट जब मैच होता है अगेंस्ट मल्टीपल नंबर्स, यू कैन ऑल्सो डू एक्स प्लस एक्स. यस, दैट इज करेक्ट. यू कैन ऑल्सो डू एक्स प्लस एक्स. अरे एक्स प्लस एक्स और 2 into x सेम ही होता है, यस और नो. एक्स प्लस एक्स और 2 into x सेम ही होता है, यस और नो. इवन इफ आई डू दिस आई स्टिल गेट करेक्ट. यस, एक ही होता है गाइस, सेम ही होता है. यस, दिस करेक्ट. या someone is saying sir constraint. Yes, coming to constraints का मतलब ये होता है that for this particular problem statement, yeah, someone is saying negative numbers. Coming to your answer, there is a field that says constraints. There is a field that says constraints. And what are the constraints? That x will always be greater than equal to 1 and less than equal to 10. These are the constraints. तो जब एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है तो जैसे आपका क्वेश्चन है ना, नेगेटिव नंबर्स है तो क्या होगा. so any developer, any user who is working on this, they are going to have this issue. sir, डेसिमल नंबर हुआ तो क्या करूं, integer है तो क्या करूं. so they always give you constraints. So you have to look at your constraints. You have to look at your constraints for this question, for the limitations of the input. Very good, Jivesh. वेरी गुड. लिमिटेशंस ऑफ द इनपुट. आपका इनपुट हमेशा 1 से लेकर 10 में ही आएगा, तो नेगेटिव आएगा नहीं. तो नेगेटिव आपको हैंडल करने की जरूरत भी नहीं. नेगेटिव इनपुट आएगा नहीं तो उसको नेगेटिव हैंडल करने की जरूरत नहीं. तो लुक एट द कंस्ट्रेंट्स. कंस्ट्रेंट्स विल टेल यू दैट there will be no negative numbers. Sir, did you write cook your dish? No, that is the default comment that comes on CodeChef. तो कोड शेफ एज अ प्लेटफॉर्म, नाम में भी उसके शेफ है, और वो जब बोलता है, आप जब कोड लिखते हो तो दे आर सेइंग कुक योर डिश हियर, मतलब राइट योर प्रोग्राम हियर. वो कोड शेफ का तरीका है. ये डिफॉल्ट कमेंट है, मैंने नहीं लिखा है इसको, ये कमेंट है. तो मतलब यहाँ पे अपने कोड लिखना है, उसका मतलब ये है राइट योर कोड हियर. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? लिमिट ऑफ इनपुट नॉट आउटपुट. करेक्ट, लिमिट ऑफ इनपुट है ये कंस्ट्रेंट. एक्स एक्स क्या है, इनपुट है कि आउटपुट है? इनपुट है ना. यहाँ पे देखो देखो ध्यान से आपको देखना है ये चीज. द इनपुट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल इंटीजर एक्स. एक्स इज एन इनपुट. कंस्ट्रेंट में भी एक्स ही लिखा है, तो ये एक्स का कंस्ट्रेंट है, ये इनपुट का कंस्ट्रेंट है. या या someone is saying explain the input वाला part again. Yes, so we are taking a number as an input. We are taking a number as an input, but by default the input function gives us data in the form of a string. So you cannot do 2 times a string. You cannot do that, right? We have to first convert this into an integer. तो मैंने क्या किया, पहले एक इनपुट लिया, फिर इस इनपुट को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, सॉरी एक इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया. आई टुक एन इनपुट, इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग. ठीक है, आप ऐसे मान के चलो ये इनपुट था 7. ये इनपुट की जगह आप 7 इमेजिन कर लो. देयर इज 7. आई गॉट एन इनपुट 7. नाउ दिस 7 हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू एन इंटीजर. This 7 has to be converted into form of an integer, and then it has to be stored in x. So actually I'm doing something like this. I'm taking the input, which is a number like 7, 8, 9, 10, but because by default the input data type is a string, so उस string को मैं integer में convert कर रहा हूँ, and in integer में आने के बाद then I have to write x. Sir, why we have to put input?
इनपुट अगर आप नहीं लोगे तो आउटपुट कैसे निकालोगे? इनपुट नहीं आएगा तो आउटपुट कैसे आएगा? जो भी हमारे टेस्ट केसेस बने हैं, ऑल आर टेस्ट केसेस हैव सर्टेन इनपुट्स एंड आउटपुट्स, राइट? हमें प्रोग्राम लिखना है, इनपुट एक्सेप्ट करने के बाद आपका कोड चलेगा और आउटपुट आएगा। इनपुट आएगा, कोड चलेगा, आउटपुट आएगा। आप इनपुट ही नहीं लोगे तो प्रोसेस क्या करोगे? प्रोसेस क्या करोगे? इफ देर इज नो इनपुट, व्हाट विल यू प्रोसेस? व्हाट विल यू प्रोसेस? आप मुझे बोल रहे हो कि सर मेरा रेंट डबल हो गया, बताओ कितना रेंट है। तो मैं आपको बोलूंगा ना, पहले आपका रेंट कितना है ये बताओ। अरे यस और नो? यस और नो? यू आर आस्किंग मी, सर माई रेंट इज डबल्ड, टेल मी हाउ मच इज माई रेंट। तो मैं आपको पूछूंगा पहले आप अपना रेंट बताओ, फिर आप अपना रेंट बताओगे, तो मैं उसको डबल करके आपको बताऊंगा। सो फर्स्ट स्टेप इज यू गिव मी द इनपुट। तो यहाँ पे ऐसे समझो, तो ऐसे समझो, दिस पार्ट इज इनपुट, एक्स प्लस एक्स टू एक्स, कुछ प्रोसेसिंग किया और फिर प्रोसेस करके उसको आउटपुट कर दिया। यस, यस। टेंशन नहीं लेने का, प्रॉब्लम सॉल्व करने का, सीधा इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, ये मैकेनिज्म याद रखना है। टेक एन इनपुट, प्रोसेस इट एंड प्रिंट द आउटपुट। यस, ऑसम, 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 ऑसम। ओके, नाउ देर इज अ वेरी वेरी इजी, किसी को आई थिंक ये क्वेश्चन हमें पहले करना चाहिए था, बट नाउ वी कैन डू दिस। आई हैव पेस्टेड वन लिंक इन द चैट। I have pasted a number, I have pasted a link in the chat. Raghav is saying, sir, why you write x plus x? The result is 2x. Raghav, x plus x and 2x is same. Raghav, x plus x and 2x is same. Yes, दोनों सेम होता है। x प्लस एक्स कितना होता है? 2x ही होता है। तो अब 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स लिखो या फिर x प्लस एक्स लिखो, एक ही बात हो गई वो। 7 प्लस 7 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 बोथ आर इक्वल टू 14। 7 प्लस 7 भी 14 होता है और 2 इंटू 7 भी 14 होता है। ठीक है, चलेगा। अब ये वाला क्वेश्चन मुझे पहले कराना चाहिए था, बट जिनको भी अभी डाउट है, यू कैन सॉल्व दिस। ये क्वेश्चन क्या बोलता है? राइट अ प्रोग्राम that takes a number n as input and prints it as output। ये फर्स्ट क्वेश्चन कराना चाहिए था, बट मुझे लगा इतना तो सबको आता ही होगा, बट बिकॉज समवन हैज, पीपल हैव डाउट्स विद इनपुट, तो यही कर लो। एक नंबर इनपुट लेना है और उसका आउटपुट कर देना है, सिंपल। यू टेक अ नंबर एज इनपुट एंड यू प्रिंट इट एज इट इज, एज इट इज। सो इनपुट, आउटपुट, 123 इनपुट, आउटपुट इज ऑल्सो 123। 15 is the input, 15 is the output, very simple। 15 is the input, 15 is the output. Very easy. So take a number input. Let's take a number input. X is equal to input. ठीक है। Now here, now here, uh, even if I print X, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली X इनपुट लेके प्रिंट कर दूं, तो भी क्या सॉल्व हो जाएगा? थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट। इंट नहीं लिखा, हाँ आई एम सेइंग इंट लिखना वैसे तो करेक्ट है, बट अगर मैं नहीं लिखा तो भी 123 से मैच तो हो ही जाएगा। Yes, so I'll still get the right answer. So if I submit without converting it into a string, आउटपुट में तो आपको फिर भी 123 दिखेगा। So I'll still get it correct. I'll still get it correct क्योंकि उन्होंने बस बोला था जो नंबर आया है वो प्रिंट करो एज इट इज। So जो हम प्रिंट कर रहे हैं उसका डेटा टाइप क्या है वो चेक नहीं हो रहा है, राइट? जस्ट ये चेंज, दिस एंड दिस बोथ आर इक्वल। यस, दैट इज व्हाट इज गेटिंग वैलिडेटेड। बट यस, करेक्ट वे आइडियली ये होना चाहिए कि आप इसको टाइपकास्ट करो क्योंकि एक नंबर है। ठीक है, ये एक नंबर है, तो जब आप एक उसको प्रिंट करोगे यू विल गेट बोथ करेक्ट। आया? आप इंटीजर प्रिंट करोगे तो भी आउटपुट क्योंकि सिमिलर है, राइट? दैट्स व्हाई वेदर यू डू एन इंट और यू डोंट डू एन इंट इन दिस प्रॉब्लम, यू स्टिल गेट द सेम आंसर, राइट? बिकॉज व्हेन यू प्रिंट 7 एज एन इंटीजर एंड 7 एज अ स्ट्रिंग, आउटपुट में सेम ही दिखता है। आउटपुट में क्योंकि सेम ही दिखता है, यस और नो? 7 इंटीजर हो या 7 स्ट्रिंग हो, आउटपुट में दिखता सेम है। आई एम सेइंग इट लुक्स एग्जैक्टली सेम, right? That is why you are going to get, in both cases, you are going to get this as correct. Cool, 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 guys. मजा आ रहा है कि नहीं? There is a constraint. Done, 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 done. Same, same, but different. Kind of. Yes, yes, yes.
यस. इज देयर एनीवन हु इज फीलिंग सर बहुत टफ लग रहा है अभी? आज डे वन है तो ऑलरेडी वी आर डूइंग इजी स्टफ, बट इज देयर एनीवन हु इज फीलिंग सर टफ है, मेरे लिए तो टफ है सर, मेरे लिए टफ है सर? नहीं सर, ये तो हलवा है. स्पैम हलवा इन द चैट. सर ये तो हलवा है हमारे लिए. इफ यू फाइंड दिस इज इजी देन राइट हलवा इन द चैट. ये तो हलवा है सर, तो हलवा है सर. रोज 2 से 4 के बीच में सर हम हलवा खाने के लिए आएंगे आप. राइट विल. इट इज इजी, इजी पीजी, इजी पीजी. यस. सो दैट इज हाउ इट शुड बी. दैट इज हाउ इट शुड बी. ओके. ओके ओके, समोसा चलेगा. कुल. नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट. नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट. नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट. नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट. क्लियर डे. नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम. मैं आपको पेस्ट कर रहा हूँ चैट में. आई एम पेस्टिंग इन द चैट. पेस्टिंग इन द चैट. पेस्टिंग इन द चैट. y कंस्टेंट 10 to the power 5. y कंस्टेंट 10 to, पिछले प्रॉब्लम में किसने पूछा है कंस्टेंट 10 to the power 5 क्यों है? क्यों है? वो तो हमें बता रही हैं. सो दे आर टेलिंग अस द कंस्ट्रेंट. दे आर टेलिंग अस दैट योर n, योर नंबर n और x, वट एवर यू वांट टू कॉल इट, दैट विल गो फ्रॉम 0 से लेके 10 to the power 5. सो 1 2 3 4 5. So they are telling us that the value of n will go from 0 से लेके 10 to the power 5. इसमें कुछ गलत है? इसमें कुछ गलत है? आदित्य, आई हैव नॉट टॉट मैथ स्प्लिट येट, डोंट वरी. इसमें कुछ गलत है? नहीं, वो हमें बता रहे हैं. वो हमें बता रहे हैं कि द इंटीजर दैट यू आर गोइंग टू गेट विल लाई फ्रॉम 0 to 1 lakh. क्या गलत है उसमें? वो तो बता रहे हैं हमें. दे आर जस्ट टेलिंग अस दैट इट कैन बी फ्रॉम 0 to 1 lakh. नो प्रॉब्लम, थैंक यू. या, no problem. They're just telling us that the constraint number will lie from 0 to 1 lakh. Okay. Next problem. Interesting problem. Code chef. Next problem. Let's cook the next problem. अगला problem solve करते हैं. अगला problem solve करते हैं. Listen to me carefully now. This is a very interesting problem. Chef classifies a day. Chef classifies a day to be either rainy, cloudy or clear. ठीक है, तो शेफ करके एक बंदा है जो बताता है कि या तो दिन रेनी हो सकता है, क्लाउडी हो सकता है, क्लियर हो सकता है. इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है. इन अ पर्टिकुलर वीक शेफ फाइंड्स एक्स डेज टू बी रेनी. शेफ बोलता है कि एक्स डेज रेनी है और वाई डेज क्लाउडी है. तो बताओ क्लियर डेज कितने हैं एक हफ्ते में? कैसे सॉल्व करोगे बताओ? शेफ सेज दैट एवरी डे इज इधर रेनी, क्लाउडी और क्लियर. शेफ सेज दैट एवरी डे इज इधर रेनी, क्लाउडी और क्लियर. एक हफ्ते में, एक हफ्ते में x number of rainy days है. There are x number of rainy days. There are y number of cloudy days. X number of rainy days, y number of cloudy days. Find the number of clear days in a week. Clear days in a week. Yeah. So let me explain this. Uh, in a week, पहले तो in a week कितने days होते हैं? In a week, how many days do you have? 7 days. 7 days. उसमें से यहाँ पे 2 और 3 दिया है, तो 2 का मतलब है यहाँ पे क्लियरली लिखा है द फर्स्ट एंड ओनली लाइन ऑफ इनपुट विल कंटेन 2 इंटीजर्स x एंड y denoting the number of rainy and cloudy days in a week. Denoting the number of rainy and cloudy days in a week. So there are 7 days in a week. If there are, पहला x क्या है? x represents cloudy, sorry, rainy days. 2 rainy days. And there are 3 cloudy days. 7 days है टोटल. There are 2 rainy days and there are 3 cloudy days. How many clear days? ये तो बहुत आसान है. तो बहुत आसान है. बचे कितने? बचे कितने? 2 rainy days हो गए, 3 cloudy हो गए, 5 days हो गए. बच 7 - 2 - 3 टोटल कितना बचा? 2. 2. करेक्ट. बस यही प्रॉब्लम स्टेटमेंट है. यही प्रॉब्लम स्टेटमेंट है. सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? व्हाट इज द सॉल्यूशन? टोटल 7 है. देर आर टोटल 7 days. X are rainy, y are cloudy. एंड आपको बच्चे कितने वो पता करने, राइट? 7 माइनस ब्रैकेट के अंदर x+y. These two are correct answer. Already most of you have written. Either you write like this
Either you write like this or you write like this. X minus 7 minus x minus y. Both mean one and the same thing. Yes or no? 7 minus x minus y या तो 7 minus x plus y. Both have the same meaning. Both have the same meaning. ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो y का प्लस माइनस बन जाएगा, तो इन दोनों में से आप कुछ भी करोगे तो करेक्ट है. बट बट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट हियर इज, देयर इज अ स्मॉल प्रॉब्लम स्टेटमेंट. क्या सर? ये तो सॉल्व तो हम कर लेंगे. इफ यू गिव अस एक्स, इफ यू गिव अस एक्स एंड वाई, इफ यू गिव अस एक्स एंड वाई, देन वी कैन इजीली प्रिंट, we can easily print 7 minus x plus y. We can easily print that, sir. That is not a problem. Sir, problem is input. Sir, problem is how to take these two numbers as input. Both are on the same line. Sir, how to take these two numbers as input? No, Ayan, that's not the right way. So we will figure out what is the right way to take two numbers as input on the same line, right? We want to take two numbers as input on the same line. So let's see how we can do that. So let's see how we can do that. Okay. So now I'm going to go to my compiler. अभी हम देखेंगे कि एक लाइन पे अगर दो इनपुट होंगे तो उसको मैं किस तरीके से इनपुट ले सकता हूँ. ठीक है. सो समथिंग लाइक दिस. आई वांट टू इनपुट्स ऑन द सेम लाइन. ए कॉमा बी इक्वल टू इनपुट. मुझे कुछ इस तरीके से करना है कि जो भी इनपुट में आ रहा है उसमें से मुझे ए और बी दोनों निकालना है. जो भी इनपुट में आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, जो भी मुझे इनपुट में आ रहा है उसमें से एक्स एंड वाई, आई वांट बोथ एक्स एंड वाई फ्रॉम द सेम लाइन. एन इनपुट फंक्शन reads one full line. Right in the chat. Input function reads one full line. Guys, ये याद रखना है. Input function reads one full line. तो input function जब आप लिखोगे as a string, एक full line वो read करेगा. या तो जब आप input function लिखोगे तो एक लाइन पे जो भी लिखा होगा 2 3, वो उसको पूरा देख रहा है. राइट. सो इट इज एबल टू सी 2 3. प्रॉब्लम इज हम उसको डिवाइड कैसे करेंगे. हम उसको डिवाइड कैसे करेंगे. दैट इज अ प्रॉब्लम. दैट इज अ प्रॉब्लम. दैट इज अ प्रॉब्लम. बाय कॉमा. ओके. बाय कॉमा स्पेस देके. अच्छा ठीक है. स्पेस देके. ओके. इन दोनों इनपुट्स को जो हमारे पास सेम लाइन पे अवेलेबल है, दो इनपुट्स ऑन द सेम लाइन अवेलेबल है, इन दोनों को हमें अलग करना है. यस और नो. इन दोनों को हमें अलग करना है. यस और नो. वी वांट टू सेपरेट दिस. वी वांट टू सेपरेट आउट दिस टू. यस और नो. हाउ विल बी सेपरेट आउट देम. कैसे सेपरेट करेंगे दोनों को. दोनों को सेपरेट कैसे करेंगे. दोनों को सेपरेट कैसे करेंगे. अप एंड डाउन. एवरीवन इज राइटिंग इन द चैट. ठीक है. तो लेट मी गो बैक टू माय स्क्रीन. ठीक है. वी आर गोइंग टू यूज द स्प्लिट फंक्शन. व्हाट आर वी गोइंग टू यूज. दोनों को अलग करने के लिए हम क्या यूज करेंगे. क्या यूज करेंगे. स्प्लिट फंक्शन यूज करने वाले हैं. जो भी हमें इनपुट में मिलेगा, डोंट वरी अबाउट इट. ठीक है. जो भी हमें इनपुट में मिलेगा उसको हम स्प्लिट करने वाले हैं. जो भी हमें इनपुट में मिलेगा उसको हम क्या करने वाले हैं. स्प्लिट करने वाले. बट विल दिस वर्क. विल दिस वर्क. इनपुट में जो भी मिलेगा उसको स्प्लिट करना. व्हाट डज द स्प्लिट फंक्शन डू. नॉट श्योर. अभी पता नहीं, बट देखते हैं. देखते हैं. सो नाउ यहाँ पे आई विल राइट 5 7. कोड तो एग्जीक्यूट हो गया. लेट्स ट्राई टू प्रिंट ए. लेट्स ट्राई टू प्रिंट बी. क्या ए और बी प्रिंट हो गए. क्या ए और बी प्रिंट हो गए. क्या ए और बी प्रिंट हो गए. लेट्स पुट सम इनपुट्स 5 7. नहीं हो रहा है. व्हाई इज इट नॉट वर्किंग. व्हाई इज इट नॉट वर्किंग. स्प्लिट इच स्ट्रिंग. यस. नॉट वर्किंग. इंट कैसे लगाएंगे. कौन सा फंक्शन यूज करेंगे. नाउ सी a few things that you need to understand here, that मैं अभी कुछ चीजें यहाँ पे यूज कर रहा हूँगा that you might not understand at the moment completely. Just trust me. इसको हम धीरे धीरे जाके इसको कवर करने वाले हैं. ठीक है. So I'm going to use a map function. Okay, I'm going to use a map function. और ये क्या करता है मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा. But just try to understand this thing
कि मुझे जो भी इनपुट मिल रहा है, आई वॉन्ट टू स्प्लिट इट एंड मैप इट टू ए कॉमा बी इन इंटीजर फॉर्म। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। सिंटैक्स है तो थोड़ा टाइम लगेगा अडेप्ट करने में, बट डू नॉट वरी। जो भी हमें इनपुट मिला है उसको स्प्लिट करना है और ए और बी से मैप करना है। किस फॉर्म में? int form. That map is important because first value has to be mapped with the first value a में जाएगी, सेकंड वैल्यू किस में जाएगी? बी में जाएगी, अगर थर्ड वैल्यू होगी तो किस में जाती? सी में जाती, एंड सो ऑन। तो राइट नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम टेकिंग एन इनपुट, आई एम स्प्लिटिंग द इनपुट। जो भी मेरे पास इनपुट आएगा उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके आई एम मैपिंग इट टू ए कॉमा बी। ठीक है, थोड़ा सा लग सकता है ट्रिकी बिकॉज आपके लिए न्यू है, बट डू नॉट वरी, यू विल गेट यूज टू इट। यू विल गेट यूज टू इट। हमारे लिए भी फंक्शंस भी न्यू है। अभी के लिए अगर आप याद भी कर लोगे उसको तो भी ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे आगे जाके आपको फंक्शंस के बारे में और पता चलेगा। स्प्लिट वगैरह आराम से करेंगे तो यू विल गेट टू नो अबाउट दिस। ठीक है, नोट्स मिलेंगी। यस। सो नाउ इफ आई ट्राई टू रन दिस, आई पुट 5, आई पुट 5 8 एंड आई प्रेस एंटर एंड यस, आई एम गेटिंग दिस। तो इंट के बाद ब्रैकेट क्यों नहीं लगा है? क्योंकि इन दिस पर्टिकुलर केस इंट इज नॉट अ फंक्शन। In this case, int is not a function here. Int, I am passing more like an argument to the map function. Trust me, you don't have to understand this right now, क्योंकि इसके अंदर मुझे आपको split function, map सब कुछ पढ़ाना पड़ेगा, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, जो हम functions वाली क्लास में पढ़ने वाले हैं। So I don't want to get into it too much in detail right now. Just think of it like this. Input function captures the string. ऐसे सोचो, ध्यान से मेरी बात सुनो। इनपुट फंक्शन ऐसे सोचो, बहुत सिंपल है। देखो, 5 स्पेस 8 आया आपके पास। कौन लेके आया आपके पास ये 5 8? इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन आपके पास ये लेके आया। स्प्लिट क्या करेगा? इन दोनों को स्पेस स्पेस पे अलग अलग करेगा। सो यू हैव अ 5, यू हैव अ 5, यू हैव अ 8। ये 5 और 8 हमें मैप करना है। ये 5 और 8 हमें मैप करना है ए कॉमा बी को, राइट? बट क्या मुझे 5 एज इट इज मैप करना है? क्या 5 मुझे एज इट इज मैप करना है या इंटीजर में कन्वर्ट करके मैप करना है? हाउ डू आई वांट टू मैप इट? डू आई वांट टू मैप इट डायरेक्टली और आई वांट टू कन्वर्ट इट टू इंटीजर एंड मैप इट? फर्स्ट आई वांट टू कन्वर्ट इट टू इंटीजर एंड मैप इट। सो जस्ट थिंक ऑफ इट लाइक दिस, कि ये इंट हो गया, ये इंट हो गया और ये इंट हो गया, समथिंग लाइक दिस। एंड ये आपका ए में 5 आ गया और बी में 8 आ गया। सो यू विल हैव समथिंग लाइक दिस। थोड़ा थोड़ा समझ में आया? थोड़ा थोड़ा समझ में आया? एक और बार करते हैं, एक और बार करते हैं। थोड़ा थोड़ा समझ में, एक और बार करते हैं। पहले इनपुट लिया तो इनपुट में क्या आया? 5 8। ठीक है, अब इनपुट क्या हो गया? स्प्लिट हो गया, डॉट स्प्लिट। सो लेट स्प्लिट दिस। 5 अलग हो गया, 8 अलग हो गया। ये इनपुट स्प्लिट हमने किसको असाइन किया है? ए कॉमा बी को, ए कॉमा बी को। बट जब आरएचएस एलएचएस को मैप होगा, when this RHS will get mapped to LHS, do I want it to map it directly or in the form of integers? In the form of integer. So I want integers to be acting on both of these values. Now I will have a comma b is equal to 5 comma 8. मैं आपको थोड़ा सा abstract करके बता रहा हूँ how this will work. And then a and b will get 8. ठीक है, तो थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है टू गेट यूज टू इट। हाँ, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेने का। हाँ, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेने का। चलिए, ओके। सो नाउ सेम चीज अगर मैं यहाँ पे भी कर रहा हूँ, सेम चीज अगर मैं यहाँ पे भी कर रहा हूँ, इफ आई वांट टू डू द सेम थिंग हियर, वी हैव टू इनपुट्स, वी हैव टू इनपुट्स। यस, वी हैव टू इनपुट्स, वी हैव टू इनपुट्स। आयुष, या, be patient. We have two inputs. First thing, we'll take the input. We'll take the input. What do I do with input? What do I do input? What do I do with input? Input का क्या करना है? हमें स्प्लिट करना है। इनपुट स्प्लिट किया, इनपुट को स्प्लिट करना है, अलग अलग करना है और मैप करना है। किसको मैप करना है? किसको मैप करना है? what आर द नेम्स? एक्स एंड वाई। किसको मैप करना है? एक्स एंड वाई, एक्स कॉमा वाई। अब इसमें क्या चैलेंज है? वाई कांट आई राइट लाइक दिस, एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू इनपुट डॉट स्प्लिट? आई कैनॉट राइट लाइक दिस, आई कैनॉट राइट लाइक दिस बिकॉज
I have to convert it to integer. So map function helps us, right? तो map function में पहला पहला जो आपका आर्गुमेंट होता है दैट इज द टाइप. तो टाइप हमें चाहिए इंटीजर एंड सेकंड इज आर डेटा. तो ये हमारा डेटा है और ये उसका टाइप है और ये मैप हो जाएगा एक्स कॉमा वाई से. ये एक्स कॉमा वाई से मैप हो जाएगा. क्या मैप हो जाएगा? ये जो डेटा है इनपुट डॉट स्प्लिट, ये इनपुट डॉट स्प्लिट वाला डेटा एक्स कॉमा वाई से मैप हो जाएगा इंटीजर में कन्वर्ट होने के बाद. ओके, लेट्स सी. It's like English. Yes, it's like English. Split the input, map it to x comma y in the form of integer. You can think of it like this. Split the input लेना है, उसको split करना है, फिर integer form में convert करके map करना है x comma y से. One more time. Input लेना है, उसको split करना है, अलग अलग करना है, then map it in the form of integer to x and y. Yes, yes. First map and then int. So it's like this. Map में you think of it like the type comma data. इस फॉर्मेट में अपने को देना है. ये मैप फंक्शन है. इसको पहले आपको बताना टाइप क्या है. इंटीजर है. टाइप क्या है? इंटीजर है. तो यहाँ पे मैंने इंटीजर लिख दिया. और डेटा क्या है? जो इनपुट से स्प्लिट हुआ है वो हमारा डेटा है. जो इनपुट से स्प्लिट हुआ है वो हमारा डेटा है. एंड दैट मैप फंक्शन हेल्प्स अस पुट दैट डेटा इन दैट पर्टिकुलर टाइप इन एक्स कॉमा वाई. अब हमारे पास x कॉमा वाई आ गया. तो व्हाट विल बी माय आंसर? व्हाट विल बी माय आंसर? नंबर ऑफ क्लियर डेज कितने होंगे? नंबर ऑफ क्लियर डेज कितने होंगे? एनीवन? 7 minus x plus y. So I can store it in a variable and then I can print the value of clear days, or I can do it in one line also. I can do it in one line or I can do it in two separate lines, right? 7 minus x plus y. 7 minus x plus y. So I can get the value of clear, then I can print it. So यहाँ पे I'll run this and 2 3 के लिए हमें आउटपुट 2 मिला है. यस, 2 3 के लिए आउटपुट 2 आएगा. वाई? बिकॉज 7 minus 2 plus 3, 7 minus 5 is 2. 7 minus, so I'm going to submit this. I'm going to submit this and we should be getting this correctly. सर फर्स्ट इंट देन मैप और मैप एंड इंट. मैप के अंदर आएगा जो भी आएगा. मैप के अंदर लिखना है. सो दिस इज द सिंटैक्स यू नीड टू अंडरस्टैंड. मैप इज अ फंक्शन दैट टेक्स द टाइप. तो आपको इंटीजर लिखना है उसके अंदर एंड देन यू राइट इनपुट डॉट स्प्लिट. दिस इज द करेक्ट सिंटैक्स. मैप के अंदर आएगा. मैप के अंदर आएगा. यस, with practice we'll be able to do it. Let's do one last problem. ठीक है. मैप शुरू है तब से नहीं समझा बिकॉज जिवेश दिस इज स्लाइटली ट्रिकियर पार्ट, क्योंकि ये सिंटैक्टिकल पार्ट है, राइट? क्योंकि ये सिंटैक्टिकल पार्ट है तो इसीलिए एक्स कॉमा वाई. हाँ, करेक्ट है राघव. यस. Atmiya, in our case, when we want to map multiple values on the same line, मल्टीपल वैल्यूज ऑन द सेम लाइन जब हमें करनी है, एटलीस्ट हमारे लिए अभी, तब हम मैप यूज कर रहे हैं. तब हम उसको यूज करें. देर आर मल्टीपल यूज केसेस. सो दैट इज द प्रॉब्लम, राइट? मैं अगर बहुत ज्यादा बता दूंगा तो वो भी प्रॉब्लम है, मैं अगर नहीं बताऊंगा तो वो भी प्रॉब्लम है. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. आई एम ओनली रिवीलिंग द थिंग्स दैट आर यूजफुल टू यू राइट नाउ. आई एम ओनली रिवीलिंग द थिंग्स दैट आर यूजफुल टू यू राइट नाउ. तो अभी के लिए मैप फंक्शन आपके लिए इतना ही करता है फॉर नाउ, कि वो आपको दो वैल्यूज ऑन द सेम लाइन, दो वैल्यूज ऑन द सेम लाइन इनपुट लेने में हेल्प करता है. जस्ट नो दैट फॉर नाउ. ठीक है, आगे जाके और भी यूज केसेस आएंगे, बट अभी के लिए मैप हेल्प्स यू टू टेक मल्टीपल वैल्यूज एज इनपुट ऑन द सेम लाइन. एक और क्वेश्चन करते हैं सिमिलर. एक और करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं. ठीक है, we can do one more. Maybe this one. Maybe this one. Yeah, I'll share the link. Last question for the day. Last question for the day. Last question for the day. Okay. I shared the link in the chat. Yes. इंट कॉमा के बाद स्पेस दोगे नहीं दोगे फर्क नहीं पड़ता शुभम. इंट कॉमा के बाद स्पेस नहीं, स्पेस मतलब दोगे नहीं दोगे फर्क नहीं पड़ता. डजेंट मैटर.
Comma के बाद space, if you give, don't give, that does not matter. Okay. Okay. Next question, guys. Should we start? Should we start the next question? Yes, guys, everyone, quick. Yes, 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 yes. Okay, okay. Yeah, yeah. Challenge. Next challenge. Next challenge. ठीक है? Off by one. Off by one. You just bought a new calculator. You just bought a new calculator, but it seems to have a small problem. All its results have an extra one appended at the end. For example, you ask it to do 3 plus 5. So answer 8 है, but it will print 81. You ask it to do 4 plus 12. Answer is 16, but it prints 161. Given A comma B, can you predict what the calculator will print when you ask it for A plus B? तो कैलकुलेटर में प्रॉब्लम है. कैलकुलेटर में प्रॉब्लम क्या है कि एडिशन करने के लिए हम इस कैलकुलेटर को यूज कर रहे हैं, बट एवरी टाइम वी डू 3 plus 5, एनी एडिशन यू डू, उसके आगे वो एक 1 लगा देता है. तो व्हाट इज 3 plus 5? 8. बट उसके आगे वो एक 1 लगा देगा, राइट? So there are two ways to solve this problem, right? 4 plus 12, आंसर क्या है? 16, बट उसके आगे वो एक 1 लगा देगा. So how do we solve this? How do we solve this? There are two ways. There are two ways. Shubham is correct. Shubham is correct. There are two ways. Yeah. Very good, Saksham. Very good, Saksham. Abhi, very good, Saksham. Abhi. Convert one. ठीक है, आप string में भी कर सकते. You can do it in string as well. So there are two ways to do it. There are two ways to do it. Yeah, one is concatenation. One is concatenation. कि जो भी आंसर है उसके आगे आप 1 को कॉन्कैटिनेट कर दो, स्ट्रिंग में 1 को ऐड कर दो, कॉन्कैटिनेट कर दो. दैट इज वन वे टू डू इट. दैट इज वन वे टू डू इट. मतलब आप पहले 3 प्लस, आपके पास इनपुट आया 3 5. यू हैव गॉट द इनपुट 3 5. यू डू 3 plus 5. व्हाट इज 3 plus 5? 8. फिर आप इस 8 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो, एंड देन यू ऐड 1. यू विल गेट योर आंसर 81. यू कैन फॉलो दिस अप. दिस इज वन अप्रोच. ओके, दिस वन अप्रोच. जो भी आंसर आया उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके 1 अपेंड कर दो. स्ट्रिंग, व्हेन यू ऐड 8 plus 1 एज अ स्ट्रिंग, इट बिकम्स 81. दिस इज वन अप्रोच. ठीक है, पहले इसको कर लेते, पहले इसको कर लेते. अगेन 10 plus 1 भी कर सकते हैं ना. हाउ डू वी टेक अगेन, फिर से दो नंबर्स इनपुट है, कैसे करना है? दो नंबर्स इनपुट कैसे लेते हैं? सेम लाइन पे, सेम लाइन पे दो नंबर्स इनपुट कैसे लेना है? a comma b is equal to, we use the map function, we use the map function that will help us to map. ठीक है, what is going to be the type for a and b? What is going to be the type for a and b? Int. So I write int, comma. हमारा डेटा आएगा इनपुट से. We take input and we split it. Right? You will get used to it. Do not worry. You will get used to the syntax. You take input, you split it. Right? And integer form में you map it to a and b. अब ये जो a and b आया है, y comma after int. So it just no, just for now, just remember this. Map has two hands. ठीक है, मैप फंक्शन के दो हाथ है. एक में आपको टाइप देना है और एक में आपको डेटा देना है. उन दोनों को सेपरेट करने के लिए बीच में एक कॉमा है, बीच में एक कॉमा है. तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज इंटीजर एंड सेकंड आर्ग्यूमेंट इज योर data which is coming from input. There are two hands and they are separated by a comma, right? So think of it like this. Map, you give something here, comma, you give something here. So यहाँ पे हमने क्या दिया इसको? Integer. यहाँ पे हमने उसको क्या दिया? Input dot split. Okay, like coordinates x comma y बोल सकते हो. ठीक है. Okay, now what do I do? Now what do I do? A comma B मिल गया. So string, अच्छा इसको add करना है. Let's do the addition. So answer is equal to, I am taking a variable answer, A plus B. A plus B. Answer is equal to, so addition is equal to A plus B. अब इस आंसर को, और let's call this C. Let's call this as C. Let's call this as C. तो अब मुझे जो फाइनल आंसर मिलेगा वो कैसे मिलेगा? वो कैसे मिलेगा? इस C का वैल्यू कितना है? 8 है. 3 plus 5 is 8. Yeah, convert it to string. Convert this to string. And then convert it to string. And then
convert it to string, and then I've converted C to string. So this is 8. तो यहाँ पे ऐसे समझो, यहाँ पे 3 5 आए, यहाँ पे देयर वाज 3 एंड 5, यहाँ पे आपके पास आया 8, और यहाँ पे आपने उसको कर दिया 8 स्ट्रिंग में प्लस प्लस 1. Will this work? Yes, this will work. This will work, right? So string में 3 plus 5 8, 8 plus 1 81. So if I submit, this should pass. This should pass, right? Excellent work, pass हो गया है. करेक्ट. इसमें किसी को कोई डाउट है? इसमें किसी को कोई डाउट है? यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 8, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 3 plus 5 8, and then 8 plus 1 81. So I printed the answer. 3 plus 5 8. तो 8 को मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, प्लस 1 81. यस. ओके, व्हाट इज द सेकंड अप्रोच? स्ट्रिंग में अगर कन्वर्ट नहीं करके फिर भी सॉल्व करना है, हाउ डू आई सॉल्व इट? स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं करना है फिर भी सॉल्व करना है, देन हाउ डू आई सॉल्व इट? स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं करना है, या द सेकंड अप्रोच इज गिवन बाय कार्तिक एंड मेनी अदर्स. सो मल्टीप्लाई बाय 10 एंड ऐड 1. मल्टीप्लाई बाय 10 एंड ऐड 1, राइट? जैसे यहाँ पे आपको 3 plus 5 8 आया, 8 into 10 80, plus 1 81. After string, how it add? It's not integer. Mayur, so when there are strings, when you try to add strings, they just concatenate. They get attached. They get attached. You can add two strings. They will get attached. Is that clear, Mayur? Hello plus world. Hello world. They get attached. Okay? ठीक है. Okay. Now, by 10 and add 1. Same यहाँ पे भी चलेगा. यहाँ पे भी चलेगा. 4 and 12. 4 plus 12 is 16. 16 into 10 is 160. 160 plus 1, 160 plus 1, 161. 161. तो यहाँ पे एक बार ट्राई करके देख लेते हैं. यहाँ पे ट्राई करके देख लेते हैं. तो a into b, so sorry, a plus b, so c is equal to a plus b, and my final answer is, anyone wants to guess what is the final answer? Answer is equal to, तो यहाँ पे 3 5 था, यहाँ पे 8 आ गया. अब 8 से 81 कैसे बनेगा? 8 से 81 कैसे बनेगा? 8 से 81 कैसे बनेगा? यस 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 यस, डोंट स्पैम रोहन, या करेक्ट, ठीक है, नो वरीज. 8 into 10 plus 1, right? So C into 10, correct. C into 10 plus 1. That's right. Print answer. Print answer. Run 81. Yeah. Submit. Okay. Excellent work. Submit हो गया. Both approaches are correct. Integer plus string possible? Yeah. I'll quickly answer this. Whether integer plus string is possible, right? So when you try to do something like this, you try to do 5 plus 8. Okay? So you're getting an error. I'm getting an error here. Can only concatenate strings, not integer. I'll answer. Once I'll answer your question. Yeah. So यहाँ पे 5 is a string. 5 is a string and 8 is an integer. I'm not able to do this. Okay. ठीक है? Unsupported operand types, right? For int. So I am trying to add one integer and one string. Does not work. Does not work. Right? So ensure कि जब आप add कर रहे हो, you're adding it in the same data type. You're adding in the same data type. String and string. String and string. Avni, that is not a valid operation. It's not a valid operation. ठीक है? Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Okay. Cool. I think there are a few homework problems. आपके पोर्टल पे भी आपको मिल जाएंगे. आई एम गोइंग टू शेयर द लिंक ऑफ दिस 3 प्रॉब्लम्स. आपके पोर्टल पे ऐड कर देंगे soon, but for now किसी को अभी के अभी करना है. आई एम शेयरिंग द प्रॉब्लम्स इन द chat. Just be active for 2 minutes, guys. I just want to talk to you guys. Don't drop off. Don't drop off. मुझे 2 मिनट बात करनी है.
मुझे 2 मिनट बात करनी है। ठीक है। कूल 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 कूल। ओके। कूल, आई थिंक हमने फर्स्ट सेशन में वी हैव डिस्कस्ड अराउंड वेरिएबल्स, वी हैव डिस्कस्ड अराउंड डेटा टाइप्स, वी हैव डिस्कस्ड अराउंड टाइपकास्टिंग, ऑपरेटर्स, कमेंट्स। हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बेसिक्स, इनपुट आउटपुट, राइट? नाउ वी आर गोइंग टू हैव रेगुलर क्लासेस लाइक दिस डेली, करेक्ट? ऐसा हो सकता है कि आपको क्लास के बाद टाइम स्पेंड करना पड़े, खुद से भी प्रैक्टिस करना पड़े। स्टूडेंट्स हु डोंट हैव लैपटॉप, इट्स ओके, डो नॉट वरी या। टाइमिंग्स के बारे में मुझे डिस्कस करना था। टाइमिंग्स के बारे में मुझे डिस्कस करना था। 2 to 4 वर्क्स, राइट? 2 to 4 वर्क्स, राइट? या। ओके। ठीक है, कूल। सी, बिकॉज इफ आई डिसाइड एनी अदर प्रॉब्लम, तो वो सी एवरी वन विल नॉट से यस टू द सेम टाइमिंग। 2 to 4 इज वर्किंग फॉर मेजोरिटी, एंड रिकॉर्डिंग्स आपको वैसे भी मिल रही हैं, सो इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम या। रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी या।